He comes from a lineage of great sages, yogis, and saints from India. He began his spiritual journey at the age of 7 and was fully realized by the age of 14. During this time, he delved into different practices and acquired mastery over Tantra, Mantra, Yantra, Aghori practices, and Yaksha sadhana. He was a siddha, and many masters, saints, and sages used to visit him in solitude to gain wisdom and guidance from him since the tender age. Although he has been helping humanity since childhood, he never disclosed this part of him to the world, and only the advanced yogis and masters were aware of his divine presence. Only in the last 2 years he chose few people from the world and started guiding them in their spiritual paths, and those who have been closely associated with him have witnessed many miracles in his presence. Despite being a family person, he is a yogi and intends to help people entangled in this world achieve Jivan Mukti, liberation while being alive. He is truly in the world but not of the world, and if you really want to understand him, look him beyond his physical appearance and just sit with him, and you will never be the same again. In his presence you will transcend your body and mind and experience the state of Sat, absolute truth, Chit, pure consciousness, Ananda, eternal bliss. Let us fold our hands in front of his divinity and with a heart filled with gratitude and love welcome our spiritual guru, the realized soul, and our enlightened master, Guru Meenakshi Mishra. ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अहं ब्रह्मास्मि। Good evening, everyone. And good morning to the people from the other side. Okay. So, here we are. So, 135th Q&A session. So, if any questions are there, you can raise your hand. Okay. So, Amarji is there. Hari, please unmute him. Yes. Amarji, please unmute, sir. Yeah. Hello, good evening, Manasji. Namaste. Good evening. Namaskar. Manasji, दो तीन चीज था. Actually, if you remember last time we discussed on this Sabar mantra and that Batuk Bhairava in the evening. तो वो मैंने shift कर दिया morning में, and things have bettered. I mean, improved हुआ है. And आपका वो Sunday morning वाला session भी बहुत था जो you had properly done that. काफी सारे लोगों का कोई issues होते होंगे तो but in between क्या होता है मेरा वो बीच में this त्रिकुट, I mean you can say that between the eyebrow, all of a sudden ऑफिस में कभी कभी कहीं पे भी थोड़ा पेन आ जाता है. I mean I don't know, वो थोड़ा ट्रिगर होता है कुछ सेंसेशन, थोड़ा पेन भी हो, हेडेक भी बोल सकते, हेडेक तो नहीं बोल सकते हो बट नियर अबाउट दैट काइंड ऑफ ए थिंग. एंड ऑफ लेट 2-3 दिन पहले जस्ट मतलब कल परसों के रात को सोते समय भी कभी कभी आई फील दैट मतलब लाइट दिखता है, मुझे नींद नहीं आता. आई मीन आई वांट टू क्लोज माय आईज बट इन द क्लोजिंग ऑफ आईज आई सी लाइट. मतलब जब जरूरत पड़ता है तो बैठता हूँ तो मेडिटेशन में नहीं दिखता है. एंड आई स्ट्रगल, समटाइम्स आई गेट, आई डोंट गेट. एंड वहां पे नींद नहीं होता है. एंड एक फियर भी रहता है कि सवेरे मैं उठ पाऊंगा नहीं उठ पाऊंगा, मैं सो ही नहीं पा रहा हूँ, नींद नहीं आ रहा है. तो आई गो एंड डू द हनुमान चालीसा, 1-2 बार करता हूँ तो नींद आ जाता है. नहीं तो सम म्यूजिक एंड ऑल दिस थिंग्स. कभी कभी आई डोंट नो व्हाई द फियर इज आल्सो ग्रिपिंग अप कि हाँ थोड़ा डर भी होता है. अरे सम अननोन जगह पे जैसे जाता हूँ मैं और सम टोटली
पता नहीं कहाँ मैं जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। तो पहले तो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट था, ये था होता, मतलब अभी जब मैं रियल पाथ में जा रहा हूँ तो फियर भी कभी कभी आ जाता है, कभी कभी मतलब यू कैन से नॉट, आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट प्रॉपरली, बट वो कंफ्यूज सा स्टेट आप बोल सकते हो। Okay. ऐसा क्यों होता है, मतलब इतना सब जानने के बाद, पढ़ने के बाद, करने के बाद भी ये क्यों होता है? ऐसा नहीं है तो Okay. कि पूरा स्टार्टिंग से है, बट Okay. So very simple answer to that is, again you go back to your creation process. We still have a reptilian brain within us, and the reptilian brain only knows two things: fight or flight mode, right? करेक्ट So अभी भी कहीं ना कहीं हम अभी भी उस परिस्थिति में हैं. We are still somewhere that is still awake within us. I don't say it is a wrong thing or a bad thing. It is the way it protects the body, right? So when it is a protective mechanism, if it is not a panic attack, if it is not something like really worrisome, then it's okay. Like everybody feels that fear. So it's okay with it. See, at times we accept certain level of pain within us. Similarly, certain level of this kind of fear is also acceptable, because if we didn't have fear, we would jump from anywhere. So fear is not only to keep us down, fear is also something that also makes us alive as well, right? करेक्ट So in that way, so accepted, at times you have to get that accepted one. करेक्ट Okay. So in such cases, you need not worry. So that is part of this life that we are in. Yes, certainly in this path that we are going through, we believe like, we feel like, okay, I did this, tomorrow the result. Yeah. Okay. So that's where this also has a hindrance within us, कि हमको लगता है कि ये झटपट मैगी वाला केस हो जाना चाहिए. और क्या होता है बीच में, अगर थोड़ी भी डिले होती है तो हमारा मन कहता है रे 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 रे, and that's where we start doubting it, right? Now just Correct. let me ask you a very prominent question to each and every one of you. Just ponder on this question. Okay. ये सिद्धांत बुद्ध का सिद्धांत है, ठीक है? When he started denying the presence of God. Okay. Here he asked a very typical question. एक ऐसा क्वेश्चन वो पूछा जिसको शायद अगर आप भी पूछोगे ना तो आपको भी डाउट होगा क्या भगवान है. But at times we need such questions to be popped up so that we also see like where we are standing right now. Okay. तो उन्होंने एक चीज कहा कि कर्म के सिद्धांत के ऊपर बात कर रहे थे वो. तो उन्होंने एक चीज पूछा कि अगर तू अच्छा कर्म करता है तो तुझे स्वर्ग मिलेगा. करेक्ट. दिस इज इट. यस. तू अगर बुरे कर्म करता है तो तुझे नरक मिलेगा. दिस इज हाउ वी बेसिकली एट अ बेसिक स्टेज वी अंडरस्टैंड दैट वे, राइट? बट ही चैलेंज दैट थिंग. ही सेड अगर तू अच्छा कर्म करने से तुझे स्वर्ग मिलता है, तो बुरा कर्म करने से तुझे नरक मिलता है, तो भगवान का क्या काम? लॉजिक, आई मीन लॉजिकल. यानी से हाउ लॉजिकल. ही सेड इसका मतलब तू अच्छा कर, तुझे अच्छा मिलेगा, तू बुरा कर, इसमें भगवान का क्या काम है? सो दिस इज वेयर वो खंडन करना शुरू किए कि भगवान कैसा है, और उसके ऊपर ये तर्क दिए कि अगर मैं बुरा काम करता हूं तो क्या मुझे स्वर्ग मिल सकता है? क्योंकि अगर भगवान है तो मुझे स्वर्ग चले जाना चाहिए, क्योंकि मैं उसको ध्यान करना शुरू करता हूं लास्ट मोमेंट में. ओके. एंड ही आल्सो सेड द सेम क्वेश्चन अगेन. अगर मैंने नीम का पेड़ लगाया तो उसमें आम फलेंगे क्या? So can you see, when a logical question is thrown at us, we start shaking up. Or this is what exactly happens to each and every one of us in a daily routine of life. और जैसे ही आप ये कहते हो कि मैं साधना कर रहा हूं, तब देखना ज्यादा लोग पूछना शुरू कर देते, तू साधना कर रहा है तो ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है तेरे साथ, वैसा क्यों हो रहा है. हाँ, एक बात बताओ, जब कोई ड्राइविंग चलाता है, मतलब कोई भी ड्राइवर जब ड्राइविंग करके रोड के ऊपर जाता है, लेट्स से ही हैज बीन अ ड्राइवर फॉर क्वाइट सम टाइम, राइट. उसके एक्सीडेंट्स नहीं होते होंगे ना? नहीं होता है ना. आई मीन हाउ कैन यू से नहीं होता? क्यों होता है? और उस पर यही मोमेंट. क्वेश्चन,
सी अमर जी, यही क्वेश्चन जब गौतम बुद्ध पूछे थे काशी में आके, उसका उत्तर नहीं दे पाए थे लोग। तो मैं अभी आपको यही पूछना चाहता हूँ, इवन इफ यू आर ए एविड ड्राइवर, यू हैव बीन ड्राइविंग फॉर 40 years, कैन यू से दैट यू विल नॉट हैव एक्सीडेंट? ऐसा हो सकता है क्या? No, you can't guarantee that. You can't guarantee that, right? So there is certain things that is not in your control. So the things that is not in your control, whose control is that in? So you say it is divine control. Divine control. Now, what is in our control is my karma. जैसे बुद्ध ने कहा कि मैं अच्छा कर्म करूंगा तो मेरे साथ अच्छा ही होगा. Right. But at the same time, लोग कहते हैं मैंने नीम का पेड़ लगाया तो उसमें मीठे फल तो नहीं लगेंगे, राइट? लेकिन शायद गौतम बुद्ध जिस पेड़ के नीचे बैठे थे, या तो आप अगर शिरडी जाएंगे तो वहां पे भी नीम का पेड़ है. राइट. उस पेड़ का जो पत्ता है वो टेस्ट क्या है? मीठा है ना? मीठा है, वो तो ये नहीं है. तो वो सवाल जो पूछा गया था उसका वैलिड आंसर है. माइट बी वो समय पे उनको समझ में नहीं आया था, बट इट इज ए रियली गुड क्वेश्चन टू आस्क फॉर. अगर दो ही रास्ते हैं ना अमर जी, देखो, एक है कि मैं सब कुछ उसके ऊपर छोड़ दिया, सो आई लीव एवरीथिंग ऑन हिम एंड व्हाट एवर हैपेंस, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. जस्ट लाइक यू आर सिटिंग इन ए एरोप्लेन एंड यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मुंबई टू हैदराबाद और एज इज. डू यू गो एंड चेक एवरी टाइम, अरे पायलट सही चला रहा है कि नहीं? अरे बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, खाली बादल बादल दिखाई दे रहे, वो जा रहा है कि नहीं, बीच में कहीं अटका हुआ है. And as I said, many a times it looks like as if the flight is not moving. It's static. So then what do you say? You go and knock the door. Hey, pilot, are you there? Are you sleeping? Are you awake? Do you do that? नहीं करते. क्यों नहीं करते? आप भरोसे पे छोड़ दिया ना उसको. नहीं, आपको पता है कि आपकी बुद्धि से उसकी बुद्धि ज्यादा है और उसको चलाना आता है. On that field, yes. In that field, right? A very simple logic. Correct. तो या तो वो रास्ता है, या तो दूसरा रास्ता क्या है? कर्म मार्ग है कि भाई तू है, मुझे पता है, यू आर देयर, और जो मैं कर्म करूंगा उसी के हिसाब से ही तू फल देगा, उससे ज्यादा नहीं देगा, कम नहीं देगा. तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने कर्म के बल से चलूंगा. लेकिन ये जो कर्म का बल है ना, यहाँ पे थोड़ा क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा भी आंधी है तो हम डगमगा जाएंगे. बिकॉज आई एम कंप्लीटली बिलीविंग इन माई सेल्फ, एब्सोल्युटली परफेक्ट थिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट. मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास है, मैं ये कर सकता हूं, ये नहीं कर सकता, जो मैं कर सकता हूं मैं वही करूंगा. बट इवन you might have seen, you are a banker, so you know it very well. You might be a master with the Excel, right? Excel, but at times one single formula goes off, and the entire sheet goes into. फिर उसको ढूंढने में कितना समय लगता है? Just to find that error, it takes like time, right? So that's where I say, जब हम we are going as a single entity, it's not that we won't reach that place or we won't achieve that. I won't become something. But the thing is, वहां पे ना एक भरोसे का वाला चीज नहीं होता. Means let's say you are a person who is heading an industry altogether, let's say. Yeah. Can you do all the work altogether? अकेले सारे काम कर लोगे? Even departmental head also can't do it. Departmental head also needs to depend on everything. Starting from what? Starting from the person who is just opening the door for the customers, right? Right. Because if he behaved wrong and customer did not show up, what's the fate of that organization? Entire chain will get broken. So can you see, like a simplest thing, लेकिन हम उसके ऊपर भरोसा करते हैं. Might be we train them, might be we tell them how to behave and all those things, but we have to believe in something, because humans are such, they cannot live without belief. जी सकते हो क्या? खुद के ऊपर नहीं तो किसी और के ऊपर बिलीव तो चाहिए. किसी ना किसी के ऊपर आपको भरोसा करना ही पड़ेगा, right? So there started the faith and belief system. कि मैं पता नहीं भगवान है कि नहीं, भाई नहीं पता मुझे, लेकिन कुछ तो है जो इससे बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे कह रहे हो ना कि आपके ये भ्रुकुटी के ऊपर जो पेन होना या फिर नींद नहीं आना, दीज आर एब्सोल्यूट साइंस ऑफ, अगर एक ही चीज आपको देखना है, यू डोंट हैव माइग्रेन्स. नहीं माइग्रेन नहीं है, फैमिली में भी नहीं है किसी को. तो इफ दैट इज नॉट देयर
And then the next thing that you have to, Amarji, see is, are there particular activities that are highlighting this for me? क्या ऐसा कुछ उस दिन हुआ जिसके वजह से ये सब हुआ? और एल्स अगर वो भी आप पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो, then absolutely these are energy level changes at physical level which is happening but without your consciousness. आप वो ऐसा ही होगा. Initially this is how it will happen. Why? Because it will hit you again and again and again and again so that you start concentrating on that. और जब आप उसके ऊपर कंसंट्रेशन लेके आते हो, then you find a solution for that, because now the problem is pinpointed. It's not an outlier. It's in the cluster, and not only in the cluster, it is in the pinpoint focus. Now, when I'm having the pinpoint focus on that, then you will realize that pain will become the fuel for your growth. So, but the point is, sorry, I'm breaking you. yeah, please. Point is, मुझे पता है कि मैंने सुना है, पढ़ा है, जाना है कि ऐसा होता है अगर आप थोड़ा डीप में जाते हो. मैं तो डीप पे नहीं गया हूँ ना, मैं बहुत ही सरफेस पे हूँ. Okay, so how did you come to know that you are on the surface? Because मैं पूरा अमेचर हूँ. I have seen so many people such a depth level उनका जो अलग है, वो मेरा तो कुछ भी एक नहीं. बात बताइए अमर जी, क्या वो सच बोल रहे हैं? Are they saying the truth? Is my question. My question is very simple. Are they saying the truth or just to be in the, वो कहते हैं ना, एक peer pressure होता है. हाँ, वो भी हो सकता है. तो peer pressure में नहीं, सबको हो रहा है, मुझे भी होना चाहिए. हाँ, वो भी. राइट. अरे सबको दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं दिखाई दिया, तो मतलब राजा नंगा है. वो कहानी सुने हो ना आप? तो वही कहानी है. कोई नहीं बोलेगा. क्यों? कि राजा का बोल दिया तो राजा सर काट देगा. सो अमर जी, किसी के ऊपर भरोसा मत करो, अपने ऊपर भरोसा करो. जब तक खुद का एक्सपीरियंस नहीं होता, किसी को मत मानो. हाँ, वी कैन गिव यू द पाथ, वी कैन शो यू द वे कि भाई ये करके देखो. इफ यू आर डूइंग इट, आर यू गेटिंग द एक्सपीरियंस और नॉट? दैट कुड बी द ओनली वे. आपका सत्य होना चाहिए. किसी को क्या हुआ, किसी को क्या नहीं हुआ, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. आई एम वेरी क्लियर ऑन दैट. आप अगर देखो अमर जी, सिंपल चीज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप सरफेस पे फ्लोट कर रहे हो? नहीं, मुझे ऐसा इसीलिए लगता है कि मैंने देखा कि लोगों का डेडिकेशन एंड प्रैक्टिस बहुत डीप में जाता है. मैं तो ऑफिस भी जाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, घर में चिल्लाता हूँ, सुनता भी हूँ. तो मैं अगर फिर बाद में सोचता हूँ तो मेरा कुछ होएगा ही नहीं, क्योंकि आई विल नॉट एबल टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ कामनेस. मेरा कामनेस रहता है बट वो टेम्परेरी रहता है. फॉर फिर बाद में फिर. अच्छा, एक बात बताइए, किसने कहा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए? मैंने ये ऐसे वही लोगों लोगों को ने गुस्सा नहीं कहा आना है, ये वही लोगों ने कहा है कि जो कहते हैं कि सोने के बाद और उठने से पहले दवाई खा लेना. चाहिए. They are not talking practical. I am saying the same thing. You see, spirituality is practicality. ऐसा नहीं कि हवा हवाई में नहीं. At times we have to understand there are certain limits of spirituality that are not in the logical space. वो मानता हूं मैं. But when my spirituality is not helping me here right now, वो spirituality का क्या करूंगा मैं? That is all stories then. मैं मरने के बाद, अच्छा कोई आके बोला है कि मरने के बाद वो स्वर्ग गया? नहीं ना. तो स्वर्ग मिलना है तो अभी मिले ना. इफ आई सी दैट आई एम हैविंग दैट राइट नाउ, देन आई कैन स्पीक अबाउट दैट. आप कहते हो अमर जी आप ऑफिस जाते हो, ऑफिस तो हम भी जाते हैं. आप कहते हो आप चिल्लाते तो अभी भी रहा हूं मैं. So all that thing, see, I can talk as you because I am in the same very similar situation. So what is the difference between you and me? बहुत डिफरेंस है उसमें. हाँ, हाइट का तो पक्का है. नहीं, फेशियल दिस अलग तो है ही है. Not only that, Amarji, let me tell you a very simple way. First and foremost thing, acceptance of a thing, right? Please, any one of you, don't ever put yourself on a scale of spirituality that I am floating and I am drowning. आप जो कहते हो कि लोग बहुत गहराई में, शायद वो डूब गए हैं, वो चिल्ला रहे, किसी को सुना ही नहीं दे रहा, बचाओ बचाओ कर रहे.
सो डोंट गो बाय दैट वे. मैं सिंपली कहता हूं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, रिमूव दैट स्केल. Might be it works in our career as a human, but not in spirituality. Now, the second thing, your greatness does not depend on the answers that you give. Your greatness depends on the questions that you ask. Are you asking the right questions to yourself? नहीं, मैं क्या करता हूं, मैं मान लिया हूं कि मैं तो अभी बहुत ऊपर हूं, मैं किंडरगार्टन में हूं. क्यों? अगर किंडरगार्टन में हो, वो आपके सवाल से पता चल जाएगा. बट यू आर नॉट आस्किंग ए वेरी टिपिकल क्वेश्चन, भगवान क्यों है, कहाँ है, क्यों नहीं है. जैसे जनरली लोग बोलते हैं, शिव के ऊपर दूध क्यों डाले, नाली में पानी में गया. These are very basic questions. You are not asking that question. You are asking a question which is actually deeper in sense. You are asking, मेरे भ्रुकुटी के ऊपर ये क्यों पेन हो रहा है? Why I am still having that fear when I am in this path? ये साधारण सवाल नहीं होते हैं अमर जी. Might be some people are asking much deeper questions. I can understand that. But when you are asking the question, also ask the same questions within yourself. कि क्या कह रहा है कि मैं अभी तक ऊपर ही बह रहा हूं. I'll tell you one beautiful story that comes from इस उपनिषद में है, ये मांडुक्य उपनिषद में है. अच्छा, मांडुक्य. यस. ठीक है. मांडुक्य उपनिषद में there was a cattle grazer, मतलब चरवाहा रहता है ना. So cattle grazer रहता है. And every day he goes into a certain mountain where he sees that there is a rishi who is sitting and doing tapasya. But this person never had any kind of spiritual experience or anything as such. Correct. But every day he would go and see that that rishi is sitting doing some or other puja or jap or something. वो अपना rituals करते रहते. Right. तो ये रोज उनको दूर से देखता और he always had that inclination, अरे क्या कर रहे, मतलब हम कितने दुर्भाग्य है हमारा, we are not able to see that, how unfortunate we are. So finally one day he goes to the rishi and he asks, you are doing so much of things, and only thing that I have been told by my parents is there is something called as God and you are serving him through this, right? तो ये आप जो जो कर रहे हो, क्या आप मुझे बता सकते हो कि भगवान कैसे दिखता है? How is God? क्या बोलेगा ऋषि? वो कहेगा तुम जा जा जा, तेरे बस की काम नहीं है, तू गाय चरा. यू गो एंड ग्रेज द काउज. तुम्हारी बुद्धि इतना नहीं है तुम्हारे पास अभी, तू जा जा. चला जाता है. लेकिन he was not silent. He still had another question. He had the same question again. ठीक है, he said me like that. क्योंकि उसको एक ही चीज समझ में आता था. He was a cow grazer, right? वो कहता है कि गाय का जब मैं दूध निकालने जाता हूँ, कभी कभी गाय लात मारती है. इसका मतलब ये नहीं कि मैं दूध निकालना बंद कर दिया. You see the understanding of that fellow? कि गाय कभी कभी लात मारेगी. अच्छा, इन्होंने कुछ कहा, should I stop? No. Let me go again. He goes again on the next day. फिर जाके पूछता है भगवान के बारे में थोड़ा बताओ. तो क्यों टाइम खराब कर रहा है? तू क्या समझेगा वेदों को, तू क्या समझेगा उपनिषद को? तेरी बुद्धि उतनी नहीं है, तू जा. भगा देते. फिर चला जाता है, फिर घर जाता है, फिर वही सोचता है, अरे गाय फिर लात तो मारती है, ये फिर चलो लेट मी गो बैक अगेन. He goes back again on the third day, fourth day, fifth day. Finally, that sage, he got irritated. Now it is written where? In Mandukya Upanishad. A sage got irritated. फिर आप बोल रहे हो आपको गुस्सा आ रहा है? चलो ठीक है. So he got irritated. Then you know what he finally said? He said, इसको जब तक कुछ नहीं बताओगे ये जाएगा नहीं, मेरा दिन खराब करता रहेगा. He will keep on coming back and keep on wasting my time. So he said, let me tell you one thing. Here, go there. You look. You are asking God how God looks and how is God, right? Can you see the biggest cattle? तुम्हारा जो झुंड है गाय का, उसमें जो सबसे बड़ा है ना, वही भगवान है. He said, that's your God. He said, oh, that's God. I have all these years I have not known it. चलता है. बोला, thank you प्रभु जी, very so thankful to you. He goes back home and every day उसकी सेवा करना शुरू करता है, believing that is the biggest God. cattle is the God. रोज उसकी पूजा करता, उसको नहलाता, धुलाता, खाना अपने हाथ से खिलाता, बड़ा टेक केयर करता.
कोई अनुभूति नहीं है, not even a single experience. But he started doing it so intentionally and so with faith and belief, because उन्होंने कहा है, he started doing that every single day. ऐसे होते होते कुछ साल बीत जाते, few years pass by. Every single day he used to just do the puja and seva of the cattle, Biggest thinking it is God. And then finally one day he was sitting and there was a sound that came within. Like there was a sound that he could hear. And the sound said, Bats, means, oh boy. Right? यही कहते हैं ना हिंदी में, Yes, Bats. yes, but Oh boy. तो पहले जब शब्द को सुना तो उसको लगा कि who might call me now from here? Nobody is around. But he had a thought that his God is the biggest cattle. biggest So he cattle. started looking at the cattle. Is it the cattle speaking to me today? ओ बत्स, फिर से सुनाई दिया, फिर देख रहा है शायद आज भगवान मुझसे बात करना चाहते हैं, माय गॉड इज टॉकिंग टू मी टुडे. Where is that? And he goes and nearly and stands near the big cattle and looks at it. Is it talking? No, it's not talking. It's just as usual. It was eating something. Then Chewing. he's again hearing, oh boy, hey butts. Then he said, no, the voice is not coming from him. He is busy eating. So from where is the voice coming? Then in that moment, he realized that the voice was coming from within. The cattle was not the God. The God was all within. The cattle became the catalyst to bring that God within out. It's just a catalyst, not the God. In one way. Yet in other way, everything is. But then he went back. Same Rishi. And the Rishi is still doing the Puja. but उसको कोई भी आज तक हे वत्स बोल के नहीं बोला. And then he goes and says, this is my experience. Then the Rishi kept everything and folded his hand and said, what did you do to get this inner voice within? Because the way you are looking right now, the aura that you have, you look like as if you have attained enlightenment. What did you do? He said, what you said me to do. I said, what? Now you showed me God and I just did the seva of it. But I realized that the voice through doing the seva, वो उसके ऊपर जो प्रभाव है ना उसका, वो मेरे अंतरात्मा में वो शांति आने लगी. Just by doing the seva of that cattle, I started having those experiences within myself of calmness, quietness, and serenity. I started having that within myself. And slowly, I didn't know, but suddenly today I heard this voice, so I came running towards you. What is it? Then that sage said, I never understood the way you understood it. Means the way, the faith that you created. I just said that to make you run away from this place so that you don't disturb me. But I never realized that actually it was not you who was disturbed. It was me who was disturbed. And the day I said that you go and just take care of the cattle, he is the God. And the way you started taking care of it, you never moved from that place. You were unmoved. And from that unmoved character that you developed, arrived your God from within. So Amarji, the cattle was the catalyst. I might be the catalyst. The idol might be the catalyst. The puja might be the catalyst. A person in your home might be the catalyst. Anything in this world that you see might be the catalyst. But allow that God to appear within you, Amarji. Because nobody's truth can be agreed upon until you have attained to that. So, अगर ये सारे चीजें हो रही हैं, you have two ways to do that. Either sit in the aeroplane, don't question the pilot, or become the pilot. Then no one would question you. You are responsible for what you do.
No, in fact, for that white light, in fact, I have tied a towel in my eyes also to make myself convinced कि भाई Didn't you सचमुच understood, है कि Amarji? I said that initially that cattle grazer was looking at the bull whether it is speaking. correct, So correct. when you are closing your eyes, it is not the external light, it is the light within. Can't you see that you have entered into a depth of such awareness where there is no darkness within? That darkness that was within, because every one of us, जो भी आंख बंद करता है उसको अंधकार दिखाई देता है. आपके आंख बंद करने से आपको उजाला दिखाई दे रहा है. इसका मतलब क्या है? Only in that It person, not simply, everywhere. Only that person. that's it. Can you see? It is indicating something about that part is getting activated. That I part could is not getting believe that power. myself. I had to tie 2-3 times on a black cloth and all things just to make myself convinced. No, I'm not hallucinating, or I'm not going through the reading of books That's and good. YouTube's video. So now after the experimentation, what did you come to know? Still coming, na? So that then I thought, So bhai, can it be then I did hallucination? put that towel again. Can it be hallucination? No, it's not hallucination, but So that means there is certainly. अमर जी, मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बोला था कि you don't even know the realm that you are entering, but you are entering even without knowing into a good place. Do you Yeah. remember that? you There told are me. certain things that I can speak of. There are certain things that I will not. Because if I start selling all of that, tomorrow morning you start hallucinating. Tomorrow वही morning है. you start imagining. No, it's not that way. So you're taking the steps, you're doing the processes. The only thing that you have to do right now is, जैसे उसने कहा ना, the biggest cattle is the God. Correct. I'm only saying one thing. I'll not show you a cattle. I'll not show anything out there. I will say you are the God. Can you believe that? Yeah. So if I am the God, then why I'm seeking God? You only seek God until you are God. Maybe. And if you have attained to that point, where is the seeking? The seeker, the seeking, and the seer, that all three. So it's all you. Correct. So who needs to... एक बात बताओ ना अमर जी, there is nothing that you need to become. हाँ. You just have to realize. That's it. Correct. Absolutely. It's so simple and so tough at the same time. जैसे आपको आप बनने में क्या करना की जरूरत है? रोज सुबह उठ के पूछते हो कि मेरा नाम क्या है, हु एम आई, हु एम आई? नहीं ना, नंबर प्लेट लगा हुआ है ना, तो ही नंबर प्लेट से जागते हो. So similarly, if I don't have to become anything, I'm already that. Similarly, what's my core? What's my core? Let alone all this light, drama, triangle, square, all that I see. Okay. But at my core, what am I? I am the real Buddha, real God, whatever. I It mean, does not matter. I won't answer that also. Because the thing that you are at your core, if you believe right now, if you pinpoint that place within you right now, you will see, you will mumble, you don't have words to speak who you are. It is so amazing at the same time. So, can you really tell me, deep down within, apart from the name and all those things, what are you? whatever I speak, it will be a part of knowledge, and somewhere it will come Can you out. see? So there is something. So utilize that knowledge. देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं भी शब्दों का इस्तेमाल कर ही रहा हूँ. Why? Because until I use the words, everybody is not going to understand that language. So similarly, to give your expression, people start saying, I saw the light. I saw this. I'm experiencing as if I'm going through a tunnel. But is it really a tunnel? Is it really a light? Is there a light that can be so bright the way you see it? No. And how come it can come from within?
then it is a clear-cut indication, Amarji. All that you have to look now is you don't have to seek outside anymore. The Come seeker again? is shining. You don't have to seek outside anymore. Yeah. It Yes, seems like the sort has been shining within you. So all that now you have to do is focus on that one particular area. Question that, what's this indication? What are you trying to tell me? What do you want me to understand? You don't have to ask it outside. Ask within. Sit and question that. And you will come to a realization, might be someday that voice comes again. Hey, what's? Then Yes. might be something else. He might say, hey, dude, how are you? Why not? Yes, why not? Hey, banker, how are you? Hey, banker, how are you? Kuch bhi. So that's the space I am talking about, Amarji. I'm not saying like just go into blasphemy of whatever it is said. No. You become your truth, because जिस दिन आपको अपने सत्यता का जानकारी हो जाता है ना, पूरी दुनिया लग पड़े तो भी आपको वहां से तो ट्रस्ट से मस नहीं कर सकते. They cannot move you from that place. I want all of you to reach to that space. ये कहानियां स्टोरीज तो मैं बोलता रहूंगा. But what about you? Who are you exactly? ऐसा तो नहीं है कि मेरा कहीं माथा लग गया और I have forgotten my identity. No, I'm not talking about that. I'm speaking very simple thing. At your core, what are you? Keep on asking this question. Keep on asking this question. And you will see all the greatest of the sages of this era. We all know how they got enlightened. So that one simple question, right? So can we say they were also hallucinating? So many. One or There are two. so many. So there are, why these people have been come into light, so that you don't think like you are dreaming, you are hallucinating, or you are just imagining. No, those people have proven through their life that this is how it happens. So अमर जी, एक काम करना, वो बैंकर की बुद्धि जो है ना, उसको थोड़ा साइड रखना स्पिरिचुअलिटी के टाइम पे. क्यों बताता हूं. I said you are not known by the kind of answers that you give, but by the type of questions you ask. And what questions are you asking? Not to me, not to anyone. I'm saying what kind of question are you asking to your own self? Because कई बार मैं देखता हूं ना अमर जी, I ask people, it is better you become an atheist rather than doing a drama as a theist. क्योंकि रोज हम ड्रामा करते हैं कि हम भगवान के ऊपर भरोसा करते हैं. इतना भी भरोसा नहीं है. रोज ड्रामा करते हैं. मैं इससे तो बेटर उसको मानता हूं जो कहता है भगवान है ही नहीं. आई एग्री टू दैट. एटलीस्ट वो तो नहीं हिल रहा अपने जगह से. लेकिन हम कहते हैं भगवान तो है, रोज दीप धूप जलाते हैं, एक हवा का झोंका आता है और कहते हैं अरे भगवान है तो फिर ऐसा क्यों. अच्छा, सो आर यू रियली बिलीव इन गॉड? और डर के मारे खड़े हो कि कहीं अगर सच में भगवान, वो कहते हैं ना, देयर वाज ए एथेइस्ट हु गॉट ओल्ड एंड इन हिज लास्ट फ्यू डेज ही रैन टू द टेंपल थिंकिंग व्हाट, अरे व्हाट इफ माय इन द एंटायर लाइफ आई वाज बिलीविंग देयर वाज नो गॉड, व्हाट इफ देयर वाज ए गॉड. ही स्टार्टेड रनिंग टू द टेंपल. At least last moment I can. Why to wait for the last moment, अमर जी? हाँ, हमारे पास एक है, जब तक इलेक्ट्रिक बिल भरने का वो आके नीचे नहीं खड़ा होता, करंट काटूंगा तब तक पैसे नहीं भरते. You're right. So why do we want to have that? नहीं, you know what? Why we like that? Because हमको थ्रिल मिलता है. Last moment पर. Last moment, like hang, अभी कटने वाला है. हाँ, नहीं अभी दे दो. And that's where I say, why do we need to hold on? Let me ask you one more question, and after that, I'll let you go. Let's say, have you seen thieves? चोरों के बारे में तो जानते हो आप. हाँ. सुने होंगे, कम से कम किस्से तो सुने होंगे.
दुख तो तब तक नहीं होता जब तक हमारे घर में नहीं घुसते, वो बैंक में अलग हो, बात है। बैंक रॉबरी तो जानना ही पड़ेगा ना बहुत। हाँ चलो, आपको पढ़ाया भी जाता होगा हाउ टू डील विद राइट। दैट। ओके चलो, सो लेट मी आस्क यू a question. When you are sitting in your home and the light goes off, करेक्ट। okay, does it not make like becomes difficult for us to move in our home only? Yeah, I mean, yeah, for a moment you feel like अरे क्या हो गया, I mean, okay, yes. अगर अंधेरा हो गया, आपको मैच बॉक्स ढूंढना है, लेट से आपके घर में इन्वर्टर नहीं है, गुड ओल्डन डेज, ओके, हाँ, घर पे छोटे सो टाइम पे। आप ही के घर में अगर अंधेरा हो जाए तो आपको जाने में तकलीफ होती है नहीं होती है? Yes, यू yes, yes. फाइंड ट्रबल और नॉट? Yes, yes, very much. लेकिन एक चोर उसी अंधेरे में आके चोरी करके चला जाता है, कैसे? वो हाँ, उसका घर भी नहीं है, कैसे? वो तो उल्टा कहता है कि अंधेरा होना चाहिए, लेट इट बी डार्कनेस, so correct, that correct. I can take the sound, like whatever I want to steal I will steal and go away. मैं कहता हूं आप अपने अंदर चोर बन के बैठो और भगवान को ढूंढो। बोलता है तू जितना अंधेरा करना है कर दे, मैं ढूंढ के रहूंगा। बुद्धि क्या है? बुद्धि अंधेरे होते ही बोलती है अरे मेरे घर में ही मेरे को नहीं पता कहां जाना है? बिकम ए थीफ ना Yes, 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 I got it, got अपने it. अंदर। मास्टरिंग डार्कनेस, ये हरि भाई ने क्या टॉपिक दिया है, लेकिन इसके ऊपर भी बात किया जा सकता है। मास्टरिंग डार्कनेस, Conquering the darkness. conquering the darkness, whatever. कौन सा darkness? You know what? Why a thief is able to go and steal in the darkness? Been As you trained. rightly said, Amarji, he has not conquered only the darkness outside. He has conquered the darkness within. Correct. उसे डर नहीं लगता अंधेरे से, इसीलिए वो कहीं पे भी चला जाता है। Exactly like our kids. Yes. एक छोटे से बच्चे को फोन दो, वो सब कुछ कर देगा। क्यों कर सकता है? क्योंकि उसके अंदर ये डर नहीं है कि ये खराब हो जाएगा। कोई है ठीक करने वाला। नहीं, उसको वो चिंता ही नहीं है कि खराब हो जाएगा, और हो भी गया तो पापा है ना, मम्मी है ना, करेक्ट। इसलिए उसको डर नहीं है। वी थिंक दे आर एडवांस, नो नो, दे आर फियरलेस। लेकिन वही बच्चा जैसे बड़ा होते जाएगा ना, वो भी देखना कितना परेशान होगा। व्हाई? द डे दैट फियर क्रीप्स इन, योर लाइफ बिकम्स अ सेल। You are not bound by anything else but by fear. And the most amazing thing is how to come out of that? Very simple. The lion is not inside the cage because of the iron bars. क्या ये statement सही है? The lion is not inside the cage because of the iron bars. क्या ये statement सही है? Yes, yes. नहीं है। नहीं, The lion is inside the cage not only because of the bar but because of the distance in the bar. उतना जगह नहीं है कि निकल जाए। निकल जाए। करेक्ट। So bar is not something that we have to worry about. It's the distance. It is not the fear. We have to create that distance through which we can pass through. The same fear will be there, but I will be free in my fear. So what's that leeway? That's where all these things come into play. ये ज्ञान तब काम में आता है। ये लोहे को तोड़ना नहीं सिखाता, ये लोहे के बीच में जगह बना देता है। संसार को तोड़ने की जरूरत नहीं है, संसार में रास्ता ऐसा बना देगा आप उसके अंदर से निकल जाओगे। Are you understanding that? सब कुछ रहेगा वैसे, बट आप निकल जाओगे। So, देखो, आपको चोरी करना सिखा दिया, आपको शेर बनना सिखा दिया, फिर आपको अपने अंदर की उजाले को देखने का सिखा दिया, फिर आपको बैल को कैसे भगवान बनाना है वो भी सिखा दिया, फिर डर इसलिए सबको लगता है, गुस्सा सबको आता है, ये भी आप जान गए। अब बचा क्या? What's the question that is left? वही तो फर्क है आप में और हम। नहीं नहीं, शेर आप भी हो, हम भी हैं। हमारा थोड़ा, हमने वो जगह खाली कर रखा है। खाली हमको अभी खाली करना पड़ेगा। That's how you have to. लेकिन एक अजीब चीज है अमर जी, लोगों को शेर कहो बड़ा खुश हो जाते, कुत्ता कहो
बट है कुत्ता भी दोनों महान है। जानवर। कैन यू इमेजिन, आई गॉट जब भी ओम बटुक भैरव नमः कर रहा था 2-3 दिन के बाद मुझे कुत्ता भी दिखाई दिया, मैं समझ गया, मतलब ठीक है, ठीक दैट चलता वुड है। बी, सी भैरव की कभी भी आप पूजा करोगे, द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स टुवर्ड्स यू इज द डॉग। हाँ, मतलब 2 कुत्ते देखा गए, तो मैं ऑल ऑफ दे ए विल सडन बी, दिमाग में बोले ये क्या देख रहा हूँ मैं, आई मीन हाउ कम आई एम सीइंग दैट, तो बाद में पता चला नहीं, उनका तो कुत्ता महान ही है। तो वो है होगा स्वान है ना उसका कैसे भी। सो अमर जी, व्हेन ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट कमिंग, अपनी साधना को तीव्र कर दो और गहराई में उतरो। दैट्स व्हाट आई से। When all आई these things, वांट टू signs are कंटिन्यू coming, no, दैट ना, I will not मॉर्निंग वाला। question, अरे क्यों दिखाई दे रहा है, I will say let me dig down. For example, आप जा रहे हो पहाड़ के पास, you are just walking, going on a mountain range, and suddenly you see something golden color shining brightly. जस्ट सूरज की किरण गिरते हैं उसके ऊपर और बहुत जोर से चमकता है. Then you go closely and you just scrape it and you see it is still shining. You scrape it further, you still see shining. क्या करोगे? वेट करोगे सबको बताने बता नहीं, उठा के निकल कि मुझे एक सोने का पहाड़ मिल गया है, या पहले कहोगे पहले इसके चारों तरफ घेरा लगाओ, इसे कोई नहीं लेके जाना चाहिए, आई एम द डिस्कवरर ऑफ दिस गोल्ड माउंटेन। सो वैसे ही अमर जी, अपने जितने भी एक्सपीरियंसेस है ना उसके चारों तरफ घेरा लगा दो। क्यों जानते हो? पौधा जब छोटा होता है ना तब उसको सुरक्षा की जरूरत होती है। When the plant is small, it needs boundaries, प्रोटेक्शन। protection. So protect it. Protect your experiences. Go deeper in that. In whatever way. जिस तरीके का एक्सपीरियंस मुझे हुआ है, लेट मी एक्सपेरिमेंट ऑन माई एक्सपीरियंस नाउ। क्योंकि अगर झूठ होगा तो 2 दिन में गायब होगा, 100% गायब होगा वो, और अगर सच है और बड़ा हो जाएगा वो। सो बी योर ओन, वो क्या कहते हैं, आपो दीपो भव, आपको बी योर ओन लाइट। हाँ, कभी डाउट आ रहा है, कभी क्वेश्चन है, पूछो। We might help you that okay, no, don't go this way, this is not the right way, that is the right way, might be that. जैसे हमने लास्ट टाइम आपको कहा कि अब वो टाइम पे मत करो, ये करके देख लो। एग्जैक्टली, दैट हैज हेल्प्ड मी लिटिल बिट डेफिनेटली। तो पक्का उसी तरीके से अमर जी, आई माइट जस्ट बी अनदर कैटलिस्ट, दैट्स इट। नहीं, मोर देन दैट। इट इज बिकॉज it you can only tell by what you have experienced, right? यस, If you have experienced me beyond that, you will tell that. If you have not experienced me beyond that, you will say वो भी हमारे जैसा ही है। but this field is as such, there is no standard process or there is no standard parameter कि बस सबके लिए ये है। My dear Amarji, I am so happy it does not have one standard process. जब आप 33 करोड़ देवी देवता का बात सुनते हो ना, 33 करोड़ तरीके से आप पूजा कर सकते हो, इसका मतलब समझ पा रहे हो आप? हाँ, 33 टाइप्स, 14 टाइप्स बोलते हैं, दैट इज नॉट 33 crores। नहीं, इट इज 33 करोड़। मैं नाम गिना सकता हूं आपको, उसका भी सेशन हो चुका है, एक बार सुन लेना जाके। अच्छा, जो खाली सपने में बैठे हुए ना कि 33 मतलब 33 कोटि मतलब ओनली 33 टाइप्स, 33 टाइप्स, हाँ, इसका भी कहीं पे सेशन हो पढ़ा। चुका है। अच्छा, इतने देवताओं का नाम बोला, पागल हो गए लोग, उसके अंदर इतने देवता भी हैं क्या? मैं बोला तुम जानते क्या हो आज तक? ओके। सो इट इज नॉट दैट 33 करोड़ मतलब only one thing you can understand, there are 33 crore types of ways that you can attain that. I am happy for that. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस मार्ग से गया, मैं वहां पहुंचा नहीं पहुंचा। And all that will happen, Amarji, is when you reach to the top of the mountain, can you say this was the only way to climb? No, from wherever you climb, you will come here only. So can I say, अरे no, this is not the way, that is not the way? हाँ, उसमें थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता हो सकता है, some tough ways, some easy ways. भक्ति मार्ग, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, ऑल मार्ग ही है, इसलिए उसको मार्ग कहते हैं, वे। बट द थिंग इज all the way goes to home. For whom? The one who walks. रास्ता ये यहां से बैंगलोर तक जाता है, मैं वही बैठा हूं, कभी बैंगलोर पहुंचूंगा नहीं पहुंचता, नहीं ना। कैसा भी करके निकलना So if I पड़ेगा। keep on walking, if I'm walking at 4 kilometer miles also, might be someday I will reach anyways. So मैं किंडरगार्टन में हूं, इसका मतलब अच्छी बात है, I still have the time to revise,
एंड वो कहते हैं ना कि एक घर बनाने से पहले उसका बेस सटीक हो जाना चाहिए। सो मुझे अगर मैं अभी बेस में इतना कुछ कर रहा हूं, दैट मीन्स अभी मेरा मजबूत बना देता हूं उसको, और फिर बनाओ एक लंबा चौड़ा बिल्डिंग, a tower of faith, a tower of experience, a tower of being that. Why not? Correct. Okay. One more questions, if you permit. Yeah. This any mantra for that matter, when you pronounce it, there are two ways. One is very simple mantras, or where we understand the meaning. Other mantras are without understanding the meaning, maybe Bij mantra or some other. So somewhere I understood कि without understanding mantra, just खाली जाप करने से क्या फायदा होता नहीं होता है. Only when you get to know the meaning and then you do that. Okay. For example, ओम बटुक भैरव नमः. I know I'm बटुक भैरव को मैं नमस्ते करता हूँ, या whatever, or any other mantra, Hanuman Chalisa, for whatever that matter. So you know the full text, you understand it and you recite it. Okay. Then you will be satisfied. चलो मैं ये किया. But कई सारे that's mental satisfaction. But let me ask you, Amarji, one thing. Let me ask you one thing. मंत्र, साबर मंत्र का मीनिंग जाना जा सकता है. हाँ, करेक्ट. लेकिन बीज मंत्र का कोई मीनिंग नहीं होता है. हाँ, वही, there's so many मंत्र, बीज मंत्र है, बाकी है जो उसका मीनिंग नहीं है, खाली मीनिंग नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए. और दूसरी बात, ये जो भी आपको ये कहते हैं कि भाई तुम अगर मीनिंग नहीं जानते तो उसका फल नहीं मिलेगा. अ का मीनिंग बताओ मुझे एक बार. अ आ ई पढ़ रहे हो ना, उसका मीनिंग बताओ मुझे. ए बी सी डी अब तक लिखते जा रहे हो, उसका मीनिंग बताओ मुझे. नो, कैन यू से व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए? A itself is not singular. I mean one B, A single unit. then B. B लेटर को आप कॉम्बिनेशन करके ही मीनिंग ला सकते हो. नहीं नहीं, उसका मतलब बताओ, मैं पूछ रहा हूं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बी? द अल्फाबेट. अल्फाबेट. नहीं, मीनिंग You तो can say B E E. B is an animal or an insect. But the alphabet B, मैं वही बोल रहा हूं. बीज मंत्र आर लाइक अल्फाबेट्स. वो मात्रिका है. मात्रिका का कोई भी विश्लेषण नहीं किया जा सकता. तो मात्रिकाओं को जोड़ के अगर मैं कुछ मंत्र बनाता हूं, उसको विश्लेषण किया जा सकता है. उनको एक बार पूछना. मात्रिका मतलब ध्वनि. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ साउंड बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर लेटर्स व्हेन यू प्रोनाउंस दैट. देखो, जब काली की पूजा करते हो ना, मतलब आपको पता होगा, उसके गले में जो मुंडमाल है वो भी 51 है. 51. व्हाट आर दोस? वो मुंडमाल कुछ नहीं, वो मात्रिका है. मतलब जो आप संस्कृत के जो अल्फाबेट्स है, दैट रिप्रेजेंट द सेम थिंग. ओके. तो क्यों उसके गले में है? क्योंकि वो मात्रिकाओं को धारण करती है. मींस सी इज बियॉन्ड द वर्ड्स. उसका मतलब ये है, उसका छेदन हो गया है कि अगर मात्रिका मतलब दैट वर्ड का भी एक ईगो जब भी क्रिएट होगा, वो उसको भी काट देगी. मींस बियॉन्ड वर्ड्स. करेक्ट. वो परा है. दैट्स वेयर इट इज सेड लाइक दैट. नाउ जो लोग आपको कहते हैं ना कि अगर मीनिंग नहीं समझ में आया तो उसको कैसे, हाउ विल इट वर्क, उनको एक बार बोलना कि मैं ग्लास में तुमको पॉइजन देता हूँ. बोलूंगा नहीं पॉइजन है, तुम उसको मीनिंग नहीं पता, तुमको पिला दूंगा, तुम बच जाओगे ना. मीनिंग नहीं पता है. नहीं, मीनिंग नहीं पता तो मैं पी लूंगा, कुछ नहीं होगा ना मुझे. सिमिलरली H2O का मीन लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सबको पता है. कितना पानी बना सकते हो? नहीं बना सकते. सो ऑल दीज थिंग्स, मैंने वही कहा ना अमर जी, ये वो लोग हो सकते हैं जो ये कहते हैं कि सोने के बाद दवाई खा लेना और उठने से पहले. क्यों? वो ऐसे कंडीशंस लगाएंगे कि आप कभी उसको रीच नहीं कर पाओगे, सो दैट यू विल नेवर क्वेश्चन देम. मैं आपको सामने बैठ के कह रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं वो करके देखो. अगर नहीं हुआ तो पकड़ लेना के कॉलर. I'm talking in that way. Why? I'm not telling a story that I have borrowed from someone. And that's where the difference comes, अमर जी. नहीं तो मैं भी कैसे बोलता, अरे अमर जी आपको ऐसे ऐसे सब होने लगे, आप तो महान हो, आपकी आरती होनी चाहिए अभी, धन्य हो गए आप. नहीं. If you are reaching home, I am the happiest. मुझे उसी से खुशी मिलती है कि अगर मैं यहां हूं, you know,
It's just like there are certain ghosts, especially आप उत्तराखंड और उस तरफ अगर जाओगे, एक तरीके का घोस्ट होता है, you will laugh at that. एक तरीके का होता है, they don't have a head but they carry a torch and walk, अच्छा, but they are not there to harm anyone. वो कौन है जानते हो? उन लोगों को रास्ता नहीं मिला, वो रास्ता दिखाते हैं. खुद को पता नहीं, दिखाते दूसरे. ऐसे बहुत सब मिले हैं ना आपको, पता खुद को नहीं है लेकिन दिखा सबको रहे. But at the same time, when especially if you go to a Telugu marriage, शादी के बाद वो लेके आपको एक अरुंधति का तारा दिखाते, वो भी दिन में. रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, दिन में कहां से दिखाई देगा रे भाई. लेकिन वो बोलता है हाँ हाँ दिख गया दिख गया दिख गया. क्यों? बाद में दिखेगा ना सब कुछ. शादी. बट देयर इज अ ब्यूटीफुल अंडरस्टैंडिंग बिहाइंड दैट आल्सो अमर जी. वो क्या करते हैं, अरुंधति तारा दिखाने से पहले उसके साइड में जो बड़ा वाला तारा है वो दिखाते हैं. उसका नाम क्या है? ध्रुव तारा जो है ना. नहीं नहीं, ध्रुव तारा नहीं. ध्रुव तारा, ये इसका. जिन्होंने देखा है वो बताए. यहाँ तो बहुत लोग हैं यहाँ पे, वो बोले वही अरुंधति तारा देखने के बाद तो अभी तक तारे दिख रहे हैं हमको. मैं कहता हूँ वही दिखा रहे हैं आपको कि तारे दिखने वाले हैं. शुक्र. Now, so now understand this. पहले क्या करते हैं, तो पहले वो बड़ा तारा दिखाते हैं. जब बड़ा तारा दिखता है देन उसको बोलते हैं उसके पास देख एक छोटा सा तारा है, तब वो तारा दिखता है. उसी तरीके से मैं कहता हूं एक्सपीरियंसेस को देखो, वो बड़ा तारा है. जब आप एक्सपीरियंसेस को देखोगे, मैं बोलूंगा उसके साइड में एक छोटा सा चीज है जो दिखाई नहीं दे रहा है. The one who is giving you the experience. And then only you will come to realize that. And that's where I say, beautiful space. So go walk. लेकिन अगर आज के बाद कोई पूछे ना ऐसा कि मंत्र का मीनिंग नहीं समझ में आया तो नहीं, जैसे अभी जगन्नाथ जी ने लिखा, तो जितने दवाइयां खाते हो सारा का मीनिंग पता है आपको? मीनिंग पता नहीं है, फिर खा लेते हो. ओके, सो गो अहेड अमरदीप, कीप वॉकिंग, कीप आस्किंग. थैंक यू. और अपने अंदर सवाल जरूर रखो. आई बिलीव दैट्स द वे यू विल फाइंड इट. आपो दीपो भव. आपो दीपो भव. Be that. Might be you will take the first light help from someone, but after that you burn brighter. Okay. Thank you so much. थैंक यू. बहुत जगह घुमा दिया आप हमको, या हम आपको बहुत जगह घुमा दिए शायद. चलो, गुड. Lot of clarity has come up at least. Yes. That's why I take time to answer. लोग कहते हैं क्या इतना घुमा, तुम्हें घुमाता नहीं हूँ. I don't want you to go with a half knowledge. I'm giving you it in a capsule. इस दिन क्या समझ में आ जाए आपको. ठीक है, चलो. थैंक यू सो मच. दीपिका जी, she is on the screen, and another Deepika, so twin. Pranam Mahadev. Audio is on different device. Okay. Oh, so now you are just like me, right? एक जगह पे बात करते हैं, दूसरी जगह पे दिखाई देते हैं हम. Unable to figure out how to connect Bluetooth for my laptop, so Okay. I'm Please using go this. ahead. It's Mahadev. Actually, the star that they show us is Vasishta and Arundhati Mahadev. Yes. I just wanted to. Yes. They say you have to तो stay इनको like याद है, that देखो. together. हाँ. You see, हमारा रात को हुआ था तो मुझे अच्छा, तो याद दिखा है था, महादेव. तारे दिखे थे आपको? दिखा था नहीं महादेव. No, it wasn't. I don't know which one was Vasishta, which one was Arundhati, but मैं भी कभी वही सोचता हूँ दीपिका जी. At times I should also show people, I look there. Until you see that, I will not allow you to go. दिखना ही चाहिए. महाराज जी खाली दिखाते हैं, उसका मीनिंग नहीं समझाते. लेकिन for us they told at that time, so that's how I remember.
But in the middle of because all those lightings that they do for marriage, nothing is visible above certain part. yes, So yes. we can't see stars. But at the same time, how beautiful this thing is, Deepika ji, you see, like when we are not able to see it clearly, do you really know that actually that star rotates around it? Yes, that's what they say. It rotates around it. So how come the astronomical understanding of our culture was so huge without telescope and all those things? They still know that there is this star, and beyond that there is a small star which rotates around it. Yes, Mahadev. So Actually, Maharaj, they rotate each other. yeah, Around एक each दूसरे other. के चारों Around तरफ each घूमते other, रहते हैं. actually. Yes, yes, yes. हाँ, इसीलिए कहते हैं कि why do they connect in that instant? Because they are also indicated as husband and wife, right? Husband and wife. वो Yes. कहते हैं कि आप भी एक दूसरे के चारों तरफ घूमते रहो, ऐसे ही घूमते रहो. चलो, yeah. So please go ahead. Actually, you answered most of my, I mean, major part of my question already through Amarji's question, Mahadev. Like, I had this doubt, like, during Shravan month, few people started 15 days ahead of us. Like, for you said, like, certain people, they follow from new moon to new moon, few people from full moon to हमारा full हो moon. गया है, हमारा कार्तिक महीना खत्म हो गया, आपका 15 दिन बाकी है. हाँ, वही Mahadev. That's what I was wondering. Like, see, if people are following it at different times, then what we consider as auspicious is also changing. So, is it really the belief that is working, or is it really the timing that is working? Because in some temples here they perform Kartik Purnima on one day. In another temples, even if it is not there throughout the day, they consider when it is. When the sunrise happens in that particular time, the whole day is considered as. So, is it really the belief of people that is working over there, or is it really the timing that works? I really wanted to know. Very good question. अरे वाह. और कितने लोगों को ये क्वेश्चन है? अच्छा, We know you have a simple answer, Mahadev. So I'm just waiting for the same question. Okay. So whether it is belief or whether it goes the same thing. मेरा एक दोस्त है, means office colleague है, so he always asks the same question. You say if you don't do puja, then you go to Narak. What about the other culture people, those who don't do puja? That question, I too have it, Mahadev. Like, what happens to? Oh my God. You should ask those questions, right? Okay. अभी तक अंदर चलो ठीक है. नहीं Mahadev, that part came up before. Yeah. What happens to people? Okay, no issues. Let me answer this for the young generation then. So the same thing people ask, like, how can you say this time is auspicious? Because now in US there is some other time, in India it is some other time. Okay. So इस चीजों को we'll understand in a very biological, in a very scientific way. Okay. The differentiation came through two dynasties, Suryavanshi, Chandravanshi. Because they are told as the two eyes of God. सूर्यवंशी जो है वो सूरज की पूजा करते थे, चंद्रवंशी जो है वो चंद्र की पूजा करते थे. तो जैसे ये दो तरीके के डायनेस्टीज बने, उनके कल्चर के हिसाब से आपकी तिथि गणना शुरू हुई. राइट. सो फॉर अस स्पेशली जो ब्राह्मण कुल है, उनका देखना सारे प्रोग्राम्स, शादी हो गया, व्रतोपनयन हो गया, वो सब दिन में होता है. They all believe in the cultures that even the marriage happens in the day, even the any kind of rituals majorly happens in the day. Whereas at our place, other thing means other castes, they all have the marriages in the night. तो कभी किसी ने मुझे पूछा था कि अरे तुम्हारा दिन में क्यों होता है? मैं बोला बुद्धिमान लोग हैं हम. We are a little intelligent fellow. They said why? मैं देख दिन में लाइट का खर्चा नहीं होता. दूसरा, लाइट का खर्चा बच गया. दूसरा, अगर झगड़ा हुआ भी शादी में, कोई पीट नहीं पाएगा, लाइट है, भाग जाओगे कहीं ना कहीं, तो दिखाई देता है. तीसरा, कुछ ढूंढने जाओगे तो इजीली मिल जाएगा, दुकान बंद नहीं होते. आर यू गेटिंग दैट? जो समझने वाले वो समझ जाते. दुकान ढूंढते हैं ना कुछ लोग,
in marriages also. आप नहीं पता, नहीं जानते, आप अच्छे लोग हो, चलो, बट कुछ लोग हैं वो कोई भी गांव में लेके चले जाओ दुकान ढूंढ ही लेंगे, ने अता पता के कोई जरूरत नहीं है। अब देखो विजय जी बड़ा हंस रहे, इनको पक्का एक्सपीरियंस है। So Deepika ji, coming back to your question, it is based on the traditional way of counting that we follow. पहले सूर्यवंशी और चंद्रवंशी जो हो गए, so one clan started doing the upasana of the Surya. Based on that, the calculations that we do, तिथि की जो कैलकुलेशन है हम चंद्रमा के उगने से चंद्रमा के उगने तक देखते हैं, मीन्स फ्रॉम पौर्णिमा टू पौर्णिमा, राइट? व्हाई? इस दोनों में क्या सामंजस्य है? व्हाट इज द सिमिलरिटी बिटवीन दिस टू? द सिमिलरिटी इज वेरी सिंपल. When I started believing in and doing the worship of sun, I saw that the sun's reflection is falling on the moon when it is a full moon, पूर्णिमा के दिन, और 15 दिन तक वो वैसा चलेगा, right? So I follow the sun rituals. That's why I will see that at least in the night I am not able to see the sun, but the reflection of the sun can be seen for the 15 days. And for the next 15 days, I'm not able to see the sun's reflection in the night. But again, when the sun arises, what should I do? I should do a puja again. Because the sun that is the God for me, I was not able to see for 15 days. Now again I see it. Means one way my God has appeared as an image. So for me, I calculate from the day it was the Purnima to the next time it becomes the full moon again. लेकिन जो चंद्रमा की पूजा करते थे उनकी कला होती थी. चंद्रमा का एक गुण क्या है? वो क्षय होता है, जिसे आप कृष्ण पक्ष कहते हो. शुक्ल पक्ष है जिसमें लाइट होता है, कृष्ण पक्ष उसे कहते हो जिसमें अंधेरा होता है, राइट? सो द वर्शिपर ऑफ द मून, व्हाई डिड दे स्टार्टेड टू डूइंग द पूजा ऑन द अदर टाइम? अमावस्या से अमावस्या क्यों काउंट करते हैं? बिकॉज दे स्टार्टेड doing the worship of moon, they said, why I should worship someone who was taking the reflection of somebody else? उधार का उजाला, समझ में आ रहा है? Why I should worship someone who does not have a power of its own but is reflecting somebody else's power? No, I will only do the puja as it is. क्या कब करना शुरू करना चाहिए फिर? जब संपूर्ण अंधकार हुआ, कृष्ण पक्ष जब शुरू होता है, तब वो उसकी पूजा करना शुरू करे. That I don't want something that borrows power for someone. I just believe in you the way you are. Very raw, very practical. तो उन्होंने उस दिन से पूजा करना शुरू किया. तो इस वजह से वो क्या करते हैं कि अच्छा, so now I started my worshipping of the, मेरा महीने का जो मीन्स एनीथिंग दैट आई कैलकुलेट, आई स्टार्ट कैलकुलेटिंग फ्रॉम द मून कैलेंडर, नॉट फ्रॉम द सन कैलेंडर. तो मैं कब तक वेट करूंगा? जब तक उसका शैडो चला नहीं, मीन्स उसका रिफ्लेक्शन जब तक खत्म नहीं हो जाता. दिस इज हाउ द टू कल्ट और कल्चर और बिलीफ सिस्टम ऑफ द सोलर एंड द लूनर केम इनटू प्ले. एंड देन बेस्ड ऑन द प्लेस दैट यू आर born and brought up with, they started giving you the idea कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. But the beauty of it, Deepika ji, is whether you believe the sun or you believe the moon, somewhere it is interconnected. Somehow within that 15 days you will do the puja. Yeah. Yes or no? Yes. इसका मतलब it is whether you are able to completely follow it for a entire month or not, even without whatever you believe, वो 15 दिन तो आप करोगे ही करोगे. So where is the importance? Is it in the entire month or it is the 15 days where the interconnection is happening? Can you see in my place from where I come from, in this physical realm, during this Kartika Masam,
just before this Purnima, there is a space of 5 days. जिसे पंचुक्का बोल के बोलते हैं, means 5 days. Okay. They say even if you are not able to do the sadhanas for the past 1 month, only these 5 days if you do, it is equivalent to doing it for the entire month. What does that mean? It's the intersection period. Oh, When the okay. intersection of period is happening, whether you are doing that puja during that time or not is more important. And the Okay. difference between you following a certain calendar and somebody else who is following the solar calendar is because of the culture that they followed. Now the question that you asked is it clear? The concept is clear now? Yes, concept क्यों is ऐसा है, क्यों वैसा है? Now the Yes. concept has been clear. Now the question is, सही कौन? सही गलत का नहीं है महादेव. Can you see? मतलब So means generally सा I'm रास्ता- asking, this is how हाँ. people ask it. वो Yeah, ये नहीं okay. पूछते कि they will very rawly they will ask which one is correct then. जैसे मैंने कहा ना, मेरा एक colleague है वो पूछता है. Similarly, they said which one is right? I said, you don't worry, which one is right or wrong. Still 15 days you will do it right. Then they will ask, why not the entire 1 month? Now you have to understand that if that entire 1 month was possible for you, you should continue from the Purnima, not only to the next Purnima, but till the Amavasya again. What does that happen? Then your sadhana time is not for only 30 days, it becomes 45 days. And what does science say? Anything that you do for 40 days becomes a habit. Habit, yeah. So what you should do? आपकी साधना को भी अगर हैबिट में कन्वर्ट करना है, whether you follow this or that, follow in its entirety. Do you remember just recently श्रावण का महीना हमने वैसा ही किया, 2.5 We महीने did for 2.5 months, yes. Right? So why we did that? I said when this has been extending, जब मुझे ये ज्ञान आ रहा है, I should utilize it rather than questioning it. So what is the utilization? मैंने उसको, मेरे कोलीग को मैंने वही कहा, दीपिका जी, I understand the person who does not know it, that there is a hole in the ground and he falls into that. I understand that. तो देखता नहीं, उसे पता नहीं था, वो गिर गया. लेकिन जिसे पता होने के बाद वो गिरे, उसे क्या कहोगे? If you know and you are still falling, what should I call you? I don't want to go into the argument whether you will go to heaven or hell. I am asking a very simple question. What should you do? एक सवाल दीपिका जी आपके लिए, जैसे मैंने अमर जी को कहा ना, मैं आपके लिए उसको क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूं. I'll just change the question. Let's say somebody tells that the place that you are living, under that there is a huge amount of jewelry and gold and golden coins and silver is all buried. How long will you wait to dig it? आपके घर के नीचे सोने चांदी दबा रखे हैं, and you came to know that. Till when will you wait? कितना दिन इंतजार करोगे? तिथि? No, nothing. नहीं ना? फिर क्या करोगे? बोला जैसा भी हो, if I have a shovel, I will take the shovel and hit it. If I just have a rod, I will do with it. Even if I don't have a rod, I will scrape it with my hands. Means I know there is a wealth deep down and I have to bring it out. Yes. How long will you wait? कोई नहीं इंतजार करेगा, खुद के निकाल देगा ना. तो मैं वही कहता हूँ दीपिका जी, when you have been given a culture in which so much of diversity has been present, what are you waiting for? I say, just like for the jewel, you will go and dig it immediately. Why don't you dig your own things in this culture and get relieved from all these things? क्योंकि बाकी कोई भी नहीं कहता मोक्ष के बारे में. Everything is tying you back. This is the only place when they say like you have a possibility. And if say this is
This I've been is in my this. actual question, Mahadev. Like, is it really the time that matters, or is it really the belief, or is it really the person who is putting the effort that Okay, matters the most? that's amazing. Was Again, my question. okay, so I have answered this even while answering to Amarji. Do you remember Yes, that? yes, Mahadev. That's I what I was said telling. that Half of them are based answered. on your karma, if God has to give the so that means he's just sitting like a shopkeeper, and whatever money, how much ever money you have, based on that he's giving you a product, right? Yeah. So what is his work? No work, right? That means अगर आप कर्म को मानते हो, if you are a believer of karma, then in your case, in my doing, it should happen. पत्थर में प्राण कौन डालता है? तिथि, समय या आप? It's the Who person who's brings doing that it. life into that stone? Who breathes life into a stone and makes it a god? Let me ask you again a very simple question. Every one of you in this room. आपके सबके घर में कोई ना कोई फोटो या तो कोई ना कोई देवी देवता का स्टैचू है? It is there? When you brought it, उस दुकान में उसकी पूजा हो रही थी? No. They were worshipping that? No, right? Why was it not worshipping it? For them, it's just a commodity that For they want to them, sell. it's a commodity. For Yeah. you, when you bring it home, you breathe It's life my into it. God. Now just tell me, how did you converted a commodity, an object, a stone into a god? It's just my belief that he is right there within that form. It is just belief. See, with just belief, what happens is I just keep a photo and I put a agarbatti and deep every day. That is just belief. But with unwavering belief, I can bring that God down into it. Yeah. है ना? स्वयंभू तो सुने Yes, ही हो. yes. How did they do that? Was it just belief? No, it was unwavering belief. So that means the Creator has given me all the powers within me. So it is not about right and wrong. It's not about the tithi. Yes, tithi का मतलब ये होता है कि there is a opening in the portal जिसे कहते हो आप. Even if you understand through this portal language, if you look at it, there are portals. So वो portal के जरिए अगर if I'm opening through this time, it's good. For example, shops are open from certain time to certain time. It does not mean that you won't get it after that. Nowadays in India, if you come, we never even thought that at 2 o'clock I can get ice cream. But now it is possible. Shop बंद हो गए हैं. There are food लेकिन आइसक्रीम trucks. घर आता है. आइसक्रीम घर आ जाता है. कैसे? That means we have found a way. So coming back to the time frame. देखो, जब भी समय की गणना की जाती है, whenever the time frame has been discussed, it is saying that this is an auspicious time through which if you do this, you will go through it. Just like this. There is a weather forecast. There is going to be heavy rain after 4 p.m. And you have to travel in your car. Yeah. So will you wait for the rain to happen and then you will go, or you will say, अच्छा, मुझे पता चल गया है कि अभी बारिश होने वाली है, उससे पहले चला जाऊं. So now in this space of understanding the time frame of good things, ये इसलिए दिया गया है कि whenever you are able to do during this time frame, you get the maximum results out of it. But let's say you never understood the meanings of this and you are just doing it for ऐसे ही कर रहे हो बस, इसका कोई मतलब बनेगा? So at times, until I understand what is beyond that, let me follow what has been prescribed. और जिस दिन, the day you transcend the time limits and space limits, कोई तिथि नहीं है आपके लिए.
Okay. उस दिन क्या होगा जानते हो? जिस दिन आप आओगे वो तिथि बन जाएगी। Just like कृष्ण किसी दिन Wednesdays. बन कृष्ण का जो जन्म हुआ था कब हुआ था? कोई Hmm. अच्छा दिन तारीख देख के आया था वो? नहीं, वो जिस दिन आया वो तिथि बन गई। Hmm. That's what I say, Deepika ji. That means there is a power within me which can change time. Okay. That means somehow or other, whatever you said is correct. Or else, you are sitting there in US, we are doing the puja here in India at a certain time. How are you going to get benefited of it? Understanding? So there is something beyond time and Hmm. space that is called as vibrations. Beyond the realm of vibrations, there is something called as the spiritual realm. And in the spiritual realm, there is nothing called as time. And then again, if you jump into the multiverse concept, you'll go crazy here if I start telling you about that. But somebody has that question, and when they ask me that, I will answer them. So you all will get it. So Deepika ji, based on my way of sadhana, मतलब जैसे मैं जिस घर में पैदा हुआ हूं, based on the lineage that I have taken birth, because the lineage has followed a certain ritual, that is why I follow this ritual. Okay. So who is right and wrong? No, it is not about right and wrong. It is based on the rituals they have followed. Okay. And anyhow, there will be a place where it interconnects. Yes. Yeah. Okay. Okay. Okay, Mahadev. And I have few more. Can I ask, or you want me Please. to? Okay. Mahadev, when you were answering Amarji, you said there is no need to know about the meanings of the mantras, right? Like most of the stutis that we have, at the end there is a Falashruti. Why is that? Why did they put that? Like, okay, if you do this, you get this. Why did they want to know that? That is icing on the cake. You see, all those are Sabar mantras. Okay. Whatever you can understand becomes a Sabar mantra. कोई भी मंत्र ले लो, कौन सा मंत्र एक बोलो जिसके नाच में फलश्रुति है और उसको फिर से पढ़ो और मैं आपको बता दूंगा वो है कि नहीं। ऐसा कोई मंत्र है? आप देखो, जब हम श्रीम का जाप करने कहते हैं, लेट से, कहीं पे फलश्रुति है ये जाप करने से क्या होगा? नहीं है। Yeah, that's what, like, मतलब क्या? there are certain ones that always mention what is the Falashruti. Yes, like, they mention it because those are all Sabar mantras only. Okay. जैसे आप लक्ष्मी का जो ये है अष्टकम है, उसको पढ़ो, Ashtakam, लास्ट में yeah. आएगा, एट द एंड दे विल से दैट अगर एक बार पढ़ते If हो you तो ये read it होगा, one दो बार time, पढ़ने 2 से ये times, होता है, 3 तीन बार times. पढ़ने से Yes. शत्रु का नाश Yeah. होता है। दैट्स व्हाट दे स्पीक Yeah. ऑफ, राइट? Mhm, एक कालम पठे नित्यम महापाप विनाशनम, Yes. द्विकाल पठे धन धान्य समन्वितं, त्रिकाल पठे महाशत्रु विनाशनम, महालक्ष्मी भर्वेन नित्यं प्रसन्ना वरदास हुआ। यही है ना? Yes. यही Yes. फलश्रुति है। Yes. So that means whenever I'm chanting that, I will also know like why I'm chanting that. So why? Because these mantras were given for the grihasthas. Okay. So जो गृहस्थ को दिया जाता है वो हमेशा एक द्वंद में रहता है, अरे मुझे पैसे चाहिए तो मैं क्या करूं? You see, the divisions of the department of gods also came into play this way. Because I just cannot run everywhere, right? Some people go to the Hanuman temple and say, I'm not getting married. ऐसे गलत दुकान पे है तू. You go to the Ram temple, not the Hanuman, But because he you're was not the getting one married. who reunited, I mean, played a major role, no, Mahadev. Like, why not? Why can't we ask him? See, He was this the one. is the understanding of a person who sees Hanuman beyond one way. But for others, they believe like, अरे हनुमान खुद शादी नहीं करे फिर. But still he married, right? So understanding, this is where Deepika ji I say,
the more and more you grow, you will see like all these things does not matter. Then why all these things? हाँ, ये वो बड़ा तारा है, the bigger Hmm. star. There is a smaller star beyond it. Small है मतलब power कम है क्या उसका? नहीं नहीं नहीं, उसके लिए नहीं. You cannot see it. That's why it is छोटा सा है. Yeah. और वही तारे अभी तक टर्म्स एंड कंडीशंस में लगते हैं, जानते हो ना, जो दिखाई नहीं देता. T&C with a small little star, और उसी में सब कुछ होता है. Yes. Mahadev, I have one more. Actually, on Kartika Purnima, they say that it's very auspicious to perform Satyanarayan Puja. I have had this question like since long time, but somehow I didn't ask you till now. I forgot to ask you, Mahadev. But this Kartik Purnima, I attended it, and throughout that, instead of concentrating on that, my mind was filled with questions. If you ever heard those stories, there are those 5 stories that are there in Satyanarayan Vratkada. Why does it instigate fear in us? Some part of it is there where it creates fear. Like that story is like that. Like she doesn't take prasad, the boat goes down, immediately she takes the prasad, again the boat comes up. Like what did they actually wanted to convey? But isn't it really misleading people, Mahadev? Like because it makes us only God-fearing people, and we can't go with fear to anyone. Got so it. So ऐसा क्यों? So this is your question. Why like this? ऐसा Why they क्यों? are having हाँ. all those And fearful this has stories in that? been this has been Okay, going on through ages, right? So yeah, there is a but very if we simple answer. if we go to a younger generation and tell them, they will definitely question us. Why do you want to go to a God if he's saying if you don't do this, I'll punish you? Absolutely. Answer दे दूं? Simple answer है. There is no Yes, complication in yes. that answer. I know, Mahadev. I mean, you don't have anything that is complicated See, the for you. very But simple answer to that is when people are coming down into the Kali Yuga, they will not have anything except fear. What did I say to Amarji? I said, until there is a fear, you are not doing anything. You will do whatever you want to do. आप सारे दुर्विचार करने लगोगे, व्यभिचार करने लगोगे, वो व्यभिचार ना करो, so that you don't just do whatever you want to do. That's why these stories, so that at least because of that fear you will be in the right path. अच्छा, एक बात बताओ, when the police people are standing on the street or the traffic light is there, is it good or bad? Are they not instigating fear within us? Yes, they are instigating fear within us, but they are also keeping us safe. They are also for keeping the safety. us path. Yeah. Yes. Now tell me why these stories? It is not to make you fearful. It is to create that awareness within you that you might falter. Don't fall into that trap. Bhagwan डरा नहीं रहा है. They narrate in such a way that you don't do this, he's going to punish you. That that narration way also actually came into another form. अगर मैं आपको डराऊंगा नहीं तो आपसे दक्षिणा कैसे लूंगा? क्योंकि आप जानते हो whatever are there, somehow or other you will falter. यहीं पे आपको समझना पड़ेगा दीपिका जी. उसने ये कहा है कि अगेन कृष्ण का फेमस डायलॉग क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य. इसका मतलब कृष्ण खुद कहता है कि धर्म का नाश होगा. मीन्स धर्म की नीचे उतरेगा. यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि ये नीचे जाएगा, ये जब भी नीचे जाएगा तब मैं आऊंगा. मीन्स somehow somewhere, अगर आपको ये पता है कि नहीं, I don't know, why did Buddha become so famous? Do you have an iota of understanding of it? कुछ भी समझ में आपको नहीं? मैं बताता हूँ. When वेदस को लेके उसको उसके means the people started changing the meaning of them as per their favor. तब ये बलि प्रथा, ये वो सारा बहुत ऊपर चला गया. मतलब व्यभिचार स्वयं मीन्स क्या कहते हैं, रक्षक भक्षक बन गए थे. So what they started doing is they started changing everything as per their wishes. पूरा का पूरा जो वेद था वो अद्वैत के बारे में बात करता है, लेकिन उसको द्वैत बना के प्रकट किया गया. Okay.
They brought up all these things as a Dvait. Because when there is duality, then only you will be kept in under control. मैं अगर आपको कहूं आप ही भगवान हो, आप मेरी पूजा करोगे क्या? नहीं करोगे. मैं बोलूंगा तू नीच प्राणी है, मैं भगवान हूं, तब मेरी पूजा करोगे आप. Yes or no? How can I create that? Then I will create instigating fear in you. मैं 4 श्लोक ऐसा बोलूंगा जो आपको समझ में नहीं आएंगे. तो मैं बोलूंगा देख तू म्लेच्छ है, तुझे नहीं पता ये सब. Then you see, it is not only with the mantras, it's also with the studies. You get intimidated by looking at certain people. Might be they are very good at their studies, might be they are very good at their looks, might be very good with their whatever way. और हम जब उनको देखते हैं, we get feel like अरे यार मेरे से नहीं होगा. Unknowingly you develop fear or not. And what does that fear do to you? That fear keeps you there. Fear binds you to one place wherever you are. आपका भय आपको बांध देता है जहां पे आप हो वहीं पे. क्या आपने देखा नहीं कि when people are in shock they cannot move? What does that mean? The fear is so huge that they are not able to move. इसका मतलब fear का meaning क्या है? It will tie you to a certain place. तो क्या कर रहे हो उसमें? Now because of this, then Gautam Buddha came, and when they questioned all these things, nobody was able to answer. Kyun? Because they didn't understood the Vedas, they were only doing what they wanted to get benefited from. Then Buddhist was very dominant. But again after that, what happened? Shankaracharya. Adi Shankaracharya. Mandan Mishra. We all know that story, right? So what happened there? He revived again that. इसीलिए कहीं ना कहीं जगह पे ये भी मेंशन है कि शंकराचार्य was again another form of Shiva. वो एक शिव का स्वरूप थे. And then what did he do? He again revived the Vedas into Advaita. तंत्र में अलग लोग हैं, लेकिन ये सात्विक स्वरूप में हम यही जानते हैं ये है. So this is how, दीपिका जी, कि बीच में कहीं ना कहीं there was a space, बहुत सारे घोटाले हो गए. Many things mixed up. And now that clarity is still not there in people. अब देखो, इतने सालों से लोग ये पूजा कर रहे हैं, like people are doing all these things, but have you ever seen people questioning this? No, they won't. You know why? Because they think अगर मैं question करने से भी भगवान गुस्सा हो गया तो फिर तो भगवान से मैं महान आत्मा होना चाहिए, क्योंकि I am much less angry than him. So Deepika ji, all these things somehow got mixed up, but at the same time there is a understanding why all these things have been instilled. But all that depends is how you see it. You remember the same story? A student goes to the teacher and he says, give me a mantra, give me a mantra. The guru says, okay, do one thing, गायत्री मंत्र दे देता है. बहुत बार आता है गुरु के पास, गुरु कहते हैं मंत्र दे मंत्र दे मंत्र दो. गुरु कहता है ठीक है, गायत्री मंत्र यही है, तो यही लेके जा. ये बहुत गुप्त मंत्र है, बहुत गुप्त तरीके से दिया जाता है, रात के अंधेरे में दिया जाता है, बहुत सारे प्रोसेसेस के बाद दिया जाता है, मंत्र दिया जाता है, वही गायत्री मंत्र. ये लड़का बड़ा खुश होता है कि इतने सालों की तपस्या के बाद गुरु ने मंत्र दिया. मंत्र लेके जाता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाता है, बस स्टॉप पे लिखा हुआ है ओम भूर्भुवः स्वः. वो कहता है ये क्या, बस स्टॉप पे इतने बड़े बड़े लैंग्वेज में लिखा हुआ है मेरा मंत्र, वो क्या बड़ा, he said it is a very secret mantra. Then he goes into the market and the song that is being played on the microphone recorder, ओम भूर्भुवः स्वः. सर ये क्या चिल्ला चिल्ला के बोल रहे, सबको क्या मंत्र दिया मुझे. फिर भाग के जाता है गुरु के पास, कहता है व्हाट मंत्र हैव यू गिवन? यू सेड इट इज द मोस्ट सीक्रेटिव मंत्र, but everybody on the walls it is written, kids are chanting that, on the microphone it is being told, what have you given me? The guru laughs. He says he was a very cool guru, like Hari bhai jaisa hi hoga shayad, but a cool guru hai. The can, what did he say? He said, take this stone. You know the stone story, right? Well, go to different people and ask the value of it. Yes.
And like based on their understanding, they will give the value of it. Yeah. सब्जी वाले के पास गया, बोला 2 किलो आलू ले ले, इसके बदले चमकदार पत्थर है, घर में पड़ा रहेगा, बच्चे खेलेंगे. But the same stone was taken to a shopkeeper, kirana store. He says, oh, very good, 2 किलो आटा लेके जा, पेपर वेट के जैसा काम करेगा. Then he goes to a businessman. Businessman says, oh, I am having a great office. It looks good on that. In the center table, I will keep it. I'll give you 2,000 rupees. Then finally, he goes to the ज्वेलरी शॉप. वो हाथ जोड़ लेता है, कहता है कि भाई मेरे कहां से मिला तुझे, मैं अपने आप को बेच दूं तब भी नहीं खरीद सकता इसे. So what does that mean? That simply means one thing. What you are, you give value in that way. आपके लिए भगवान क्या है, वो भगवान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है. All these stories, इसका कोई मतलब नहीं है कि कहानी में क्या लिखा गया है. All that matters is who are you. और मैंने क्या कहा, it's not about the answers, it's about the question. Can you see, with questioning answer came. Or else for ages people will live in the same darkness because nobody questioned it. तो बताइए कहानियां ऐसी क्यों बोली गई? Both ways. One, people will be immoral in this world. So to keep a control on them, it has to be told in that way. But the sad part is, the immoral people wrote it. That's the problem. But when you have understood that, जब भी किसी को लगे ना कि कोई भी किड पूछे ना कि भगवान को क्यों, like why you should believe in somebody who says like I'll punish you if you don't come to me, उसको हमारा वो सेशन सुना देना. कौन सा? How not to love God. Yes. And give them and let them decide now whether they should love God or not. उनको दे दो, वो खुद डिसाइड करने दो ना. You don't say love God. You say no, I will tell you how not to love God. And then let them go through that. And then Deepika ji will see like another way of understanding, another clarity of thought will come into play. And I want to arise the right question within you people, the instigate the right questions within you people. ये देखो अभी भी एक चिदविलास व्रत में अटका हुआ है. भाई तू एक काम करना, मेरे को 5 कहानियां सुनाओ पहले तुम. Then I will decode that entire story for all of you. Okay, someday we have to do that then. So somebody will read the story, we will all listen, and after that we will come to understanding कि सच में डरा रहा है कि और कुछ समझा रहा है और वो डर के जैसा दिख रहा है. Just like the earth people experience lunar eclipse. Yes? But because of whom is the lunar eclipse? Sun. So your fear? It is because of me. So who can bring it to light? Because of me. Again, the same thing, Deepika ji. It's not about what it is written. What's my understanding about God? And now why you are questioning that, because now your God looks so lovable. I am now questioning why he can be so angry on us, why he should be the punisher. Probably after coming to your sessions, I can't accept that he is there to punish. I can't accept that. They might have experienced him in that way. We have experienced him in this way. They might be right in their own ways. We are right in our ways. All that is how I see that. That's it. Okay. Right? Yatha drishti, tatha srishti. इसीलिए कहते हैं ना, as you see it, so be it. Mahadev, also one more. Yes. Sorry. Yeah, please, don't worry. We will ask some people to bring their hands down. Please ask. Last one. Okay.
Actually, why are few experiences in such a way that we doubt whether they are hallucinations? No problem. Because I didn't get you. I said no problem. Please continue. Why are few experiences in such a way that we feel they are hallucinations? Okay, good. Because off late, like since last 7 to 10 days after this Kartik month started, there were many a times like I got frightened thinking that there is someone right next to me, crossing me or passing me within my own home. So I was like, why am I hallucinating so much? Or I don't know, Mahadev. That's what, like, there are certain things which don't let us believe something that we might have experienced even for a moment, or I don't know. Maybe I was really hallucinating. I don't know. That is what I'm not even able to put my question properly in words, Mahadev. No That's my issues. No issues. I situation right got that. now. I get it. I say, like, can I put it in this way? Like, certain experiences, why I'm not able to believe in those? It just looks like a hallucination or a dream or something like that. Yes. Or might just be a coincidence, right? Yes. Okay. So why so? Very simple. The simplicity of thing is, it depends on the, what do you say, state of your mind. Right now, when you are sitting here and you are listening to all these things, and when you are questioning all these things, is there a possibility of hallucination? That you are hallucinating, that you are asking a question, you are hallucinating that I'm answering? No, no. Why? Why is it not a hallucination? Why is it not a dream? Simple answer. Because you I'm are able awake. to see it. You I'm are able awake. to see it. And the very simple thing is, you are awake. Right? So when you're awake and still you are seeing all these things, that means it's not a hallucination. So become aware and awake to your experiences. If you are aware and awake to your experiences, if it is a hallucination, it will vanish in front of you just like a bubble. But I am completely aware and I am still seeing it in front of me. Then what? I don't see a physical form. I only feel like if something so has just crossed. Were you able to hear my Sunday session anyway? Yes. You remember that 17, 18-year-old kid? I told a story from my life where there was a 17-year-old kid and I was half his age, like around like 12. Yes. 13. So वैसा ही करना चाहिए आपके साथ. We don't believe until something has inflicted pain on me. भगवान आके ना आप एक जोर से लगाना चाहिए आप सबको, तब मानोगे कि है बोल के, कि तो ये तो hallucination नहीं हो सकता. But क्या करें? I'll tell you one thing. Am I over imagining myself that something like this is happening is what sometimes I feel, Mahadev, because okay, I got it, Deepika ji. So let me answer you in a very simple way. The same question came to few scientists. They were asking some Indian philosophers, scholars, why do you have so many gods? Why how were you able to see like this was there, the earth is here, there, and all those things? How were you able to do that? This is all blasphemy. The simple answer to that is, it's okay. I over-imagined. I might have hallucinated. I might have imagined. I would ask another question to them. I said, I will answer you through a question. We were able to hallucinate. We were able to imagine. Why can't you? Why were you not able to even imagine that?
दैट मीन्स तेरी Hmm. बुद्धि उतनी है, तू उसके आगे सोच ही नहीं पाया, हमारी बुद्धि देख कहाँ है, हम वहां तक पहुंच गए. Now Deepika ji, as I said, Okay. the smallest of the plant needs protection. What does that mean? That exactly means what you are asking. Initially, it looks like a hallucination because the mind, what is hallucination? What the mind cannot conceive is becoming or appearing in front of me. कुछ ऐसा हो रहा है जो हो नहीं सकता. Then what is a miracle? Miracle is also the same thing. जो नहीं हो सकता वो हो रहा है. Now let's go to the litmus test of it. कि whether I'm hallucinating or whether it is really happening to me. Same thing. In that moment, become completely aware of yourself and your surrounding. Look at your mind and then ask this question. But the funny part is, when I'm even asking this, how many of you really feel there is something on the right side of your back? आप शायद देख भी नहीं रहे हो, but there is something on the right side, especially from the shoulder girdle to the right side of your hand. It feels like somebody is there. हो रहा है किसी को? समझ में आ रहा है किसी को? नहीं ना? Is it there? No, right? If I said and you said yes, ये hallucination हो सकता है, because I instigated that and you experienced it. That might be hallucination. But if it is there, I don't have to say it because I feel it. What does that mean? That means your experience, and the difference between hallucination is always instigated, means it is connected to something. I pushed it so hard, it is taking a shape in my mind, like a ghost. I got it. Okay. Got it? So now what you have to do in that moment, you remember that beautiful story that comes from the Upanishads, the snake and the rope story. Yes. There was a big rope that was falling on the street. Many thought that it was a snake, ran away. Many thought it is a rope, they crossed over it. Yeah. So was it a rope or a snake? No, it was a rope. In reality, it was a rope, but it was appearing as a snake. But the moment you realize that it is a rope, where did the snake go? It never Kahin nahi. existed. So, That means when I'm saying you think like you're hallucinating, look at it carefully. Is it a rope or is it a snake? Because if you realize in its core, it is a rope, the snake, you don't have to throw the snake away. The snake vanishes. You don't have to throw away your hallucinations. Your hallucinations vanish. What is required? Knowledge, clarity, watchfulness, awakefulness, awareness. okay. So become aware of that. And now say, if you are really trying to play a hide and seek in front with me, why don't you come and sit in front of me? पूछो और आगे सामने बैठ गया तो हाँ वो अलग वर्ड होता है एक हिंदी में. Every time I was frightened, Mahadev, like I was like doing this to myself. I was Now doing can this you to see, myself Deepika because ji? You see, आपको एक ही चीज बदलना है इसमें. You only said, how can you be frightened of God? no, I didn't know what it was. I only That's why I say, felt like something Deepika is ji, you remember just one of the time I said like, किसी ने मुझे पूछा था ना कि how come were you able to go into those places at that young early age? You are all alone. I said, how was I alone? मैं अकेला कहाँ था? आप ही कहते हो कि भूत है, तो वो है ना कोई ना कोई तो है, तो डर किस बात का? अकेले होता तो डर लगता. आप कहते भूत है, तो मैं हूं वो है, तो दो लोग तो हो गए, फिर डर किसका? But here, Deepika ji, you have to change one thing. What is the change? Whenever there is a fear, give that fear not a face of a demon, give that fear a face of your God. I didn't get the Tell me thought of what a will happen. demon, Mahadev. I thought a person was walking, like I got it. someone is passing by. लेकिन Then वो डर लगता I है ना, got just वो डर लगता है ना, वो क्यों डर लगता है suddenly ना? इसे unknown fear कहते हैं. I don't know what passed by. what But it if was. I say, हनुमान जी गए अभी, Yeah.
Yeah, there At is nothing least, wrong in I can thinking that. Okay. so at least you will not be fearful. Hmm. At least you will not be freezed. And you know what you will do, Deepika ji? Another such coincidence happened from my early childhood days. Again, the same age, 11, 12. I was into a sadhana and somebody came, it appeared. See, because sadhana is not easy always. It has very, very typical things that happen. Hmm. It was a very frightening situation. But you know what happened? I correlate it with like the Beauty and the Beast movie. Have you seen? Hmm. Right? So there is a girl who is kidnapped and then it was a beast. And then finally she falls in love with the beast. And after all, after really knowing it, and then it comes back to in real shape as a Yes. human, Hmm. right? Hmm. Hmm. Or the kiss of the frog and the princess, the same stories. That time, when a particular image appeared in front of me, it was so, I cannot say fearful, it was so ugly. Hmm. Because at that time, I was starting my sadhana in Aghor. So till that time, I was still having that very kitna ugly dikh rahe ho. Yuck kind of thing that you speak of, right? Okay. That very moment, when it appeared in front of me, I don't know what happened, what changed within me in that moment. There was a mixture of fear and what do you call disgust, actually. Hmm. Hmm. Little bit of fear, but more of a disgust. But even in that moment, I folded my hand and I just said, "Wah, माँ तू आ गई." माँ तू आ गई. And you know what I started doing? I started doing the puja with the things that I had around me, as if I am doing the puja of the goddess. You know what happened after that? You won't believe what happened until you have seen the movies. Exactly something like that happened. In that space, it converted itself into an amazing being. And it folded his hand in front of me and he said, I never knew that this could also be a path in me. Somebody sees a divinity. And that simple way of doing the puja was the pathway for its release from that space. जो इतने युगों से उसमें भटक रहा था, उसको एक मौका मिल गया क्योंकि उसकी पूजा देवी के जैसा हो गई. उसके ऊपर जो कर्स था, that was eliminated because she was worshipped as the goddess. And that very moment, it found its liberation. So Deepika ji, why not you? How do you know what is trying to trouble you is not trying to trouble you? Might be you have to change something within you. You become so powerful, such a space that whoever touches you experiences freedom, not binding. तो आज के बाद कभी भी कोई भी चीज आए, why can't you see the divinity in that? आप वही देखोगे जो आपके अंदर है. अगर आपके अंदर अंधकार है तो आपको अंधकार दिखेगा. Why can't I light up myself so brightly? You see the fireflies? You become the firefly. अंधकार में भी जुगनू की तरह चमकूंगा और आप शायद किसी और को रोशनी दिखा दोगे. Might be you become someone who gives liberation to others. And I cherish each and every moment of those of my life. क्योंकि किसी को मुक्त करने में जो शांति और सुख का अनुभूति होता है ना, वो किसी चीज में नहीं. I have lived it, I have loved it, and I will live it. Because I have only one thing within me. I only know how to liberate. And that's my entire motto here. And I will live on to that only. So कोई भी आए, तो भूत आए चाहे प्रेत आए, उसे भी कहना, हे प्रभु आ गए आप. शायद ऐसा भी हो जाए वो हाथ जोड़ के बोले, क्या हुक्म मेरे आका. Why not? Why not? And literally, Deepika ji, I have seen this happening in a practical life also.
I applied the same thing when I was talking to the criminals. I applied the same policy. I listened to their stories. Then I said, you don't look so ugly as you say yourself to be. You don't look so bad as you are portrayed. You don't look so heinous as you have been tagged. Can you tell me the beauty of you? And then for the first time, they could realize that there is someone who sees beauty in us. And we were always there just to prove somebody that they said, I am a criminal and I will be a criminal. But today you saw something beyond that what I am, which I have buried deep down within myself. You have opened that box up. And now when I look at, when you are asking about my own beauty, when I see this, the ugliness does not stand in front of my beauty. And I choose to be beautiful. And I choose to leave everything what I have been doing. Is it worth or not? Did I do the right thing, or I should have judged them the same way? I practically saw changing lives by just few kind words. And we all know 42 people surrendered. I could have told the same thing. ज्ञान दे सकता था, तू ऐसा है, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर. कौन सुनेगा? सब तो वही बोले ऐसा मत कर. No. If you understand to see the beauty in everything, you know what he will bring out? He will bring out the beauty from them. देखे ना स्कल्पचर बनाने वाले को, वो पत्थर के अंदर भी सुंदर मूर्ति देख लेता है, वो मूर्ति को बाहर निकाल लेता है. आपको भी वैसा ही बनना है. हर एक पत्थर में भगवान को देख लो, हर एक पत्ते में भगवान को देख लो, हर एक इंसान में भगवान को देख लो. मुझे नहीं पता इससे बड़ी कोई स्पिरिचुअलिटी हो सकती है. आप कार्तिक महीना किए नहीं किए, अगर इंसान को इंसान की तरह नहीं देख पाए और इंसान में भगवान को नहीं देख पाए, हर कण में उसको नहीं देख पाए, तो किस बात की स्पिरिचुअलिटी? और अगर वो हर कोने में, हर कण में दिखने लगा, तो कौन सा समय ऑस्पिशियस है और कौन सी जगह? बिकॉज वेर एवर यू गो, मैंने कहा ना, आप जहां जाओगे आप तिथि बना दोगे. आई बिलीव इन दैट. And not believe, I've seen it happening rightly. So is it wrong to see good things in people? जब सारी दुनिया आपकी खामी निकालने के लिए बैठी हुई है, कोई एक तो होना चाहिए जो आपके अंदर की अच्छा ही देख पाए. क्या ये बुरा है? और अगर ये बुरा है तो मैं बुरा हूं. And I'm happy with that. But I will only see the best part in you. अगर इसमें मेरा, if you see fault in me, no problem. That's your problem. My problem is I cannot see ugliness in you. I can see the beauty. और मैं निकाल के रहूंगा. अरे चोर डकैत से निकल गए, आपसे नहीं निकलेगा. क्या बात कर रहे हो आप? I'll not go until you find your own beauty. समझ में आया? Who I am and why I'm here for. I will tear apart your darkness. I will tear apart your ugliness. And that's why many people fear. They don't come in front of me. वो मेरे सामने नहीं आते, मेरे से भाग जाते. क्यों जानते हो? उनको लगता है कि वही एक चीज बाकी है उनके पास, उनका अगलीनेस. और उनको पता है कि इसके सामने गए तो फाड़ देगा इसमें. He will tear it apart. But they don't know what is hidden within them. I don't tear you apart to make you feel bad. I tear you apart so that you see your own shine. बिल्कुल हनुमान की तरह. उसको कौन सा औषधि है पता नहीं था, पूरा का पहाड़ उठा के लेके आ गया. राइट? लेकिन आप एक चीज नहीं जानते, उसके बाद वाली घटना. जब वो वैद्य ने देखा कि अरे हनुमान ये क्या लेके आ गए, व्हाट हैव यू ब्रॉट? यू ब्रॉट द एंटायर माउंटेन. He said, yes, I didn't know what to do, so I brought the entire mountain. But nobody knows beyond that. They found out more than, I don't know, like कहीं पे 30 लिखा हुआ है, कहीं पे 300. So I don't know the count.
उतने औषधियों वाले वृक्ष मिले उसमें, including certain things where Ram was like the Sena was fighting, they were killed and they were again revived into life overnight. वैसे औषधि मिले उसमें। हनुमान खाली पहाड़ उठा के लाया था बस, लेकिन वो पहाड़ में ये सब है वो भी नहीं पता था। So that's how bring out the beauty within people. How do you know what they can do? अरे ugliness is everywhere. It is especially in the mind. Bring out that beauty. और जो वो सुंदरता निखार सकता है ना, मुझे लगता है कि वो भगवान का हाथ है। कचरा कोई भी कर सकता है, साफ कितने लोग करते हैं? बी दैट। शायद हाथ गंदे होंगे, होने दो, लेकिन जगह साफ करके जाऊंगा। वो होता है ना एक वॉशिंग मशीन, सारे गंदे कपड़े आप उसमें डाल देते हो, उसी में घूमते रहते हैं, लेकिन वो आपको साफ करके चकाचक करके बाहर निकाल देता। हम वॉशिंग मशीन है भाई, फेंको, नो प्रॉब्लम। सो कैन यू से वॉशिंग मशीन इज बैड? क्या सचिन जी वॉशिंग मशीन खराब चीज होती है? अगर वॉशिंग मशीन खराब है तो हम सबसे बड़ा खराब चीज है, क्योंकि हम आपको धुलाई कर देते हैं। ओके, तो दीपिका जी, This was तो wonderful. whoever moves around you is only God. मैं यही मानूंगा कि आज के बाद जो मेरे तरफ घूमता है, मेरे चारों तरफ जो घूमता है, वो भगवान ही हो सकता है। मेरे तरफ आगे पीछे और कोई घूम ही नहीं सकता। क्यों? Like attracts like. I am God. God is attracted towards me. When you narrated that story, I saw myself in that Mahadev. I didn't see anybody else. I mean, I felt like that somehow. You saw the divinity in someone like me. I See, can't every even one imagine. of you deserve that. It's not that I'm just saying to elevate you or say अरे नहीं तुम महान हो। No, नहीं, Mahadev, मुझे महानता not बढ़ाने only की me. कोई जरूरत नहीं है। Everybody I over just here. want to bring that goodness from you, क्योंकि है आपके अंदर। I'm not talking about today or after so much interaction, Mahadev. Like on the day one when you met us or when you chose us, we are really thankful for that, Mahadev. Everybody, each and everyone is thankful to you. जैसे धवल जी कहे ना, हैमर हैमर, तो किसी के लिए चाकू हूं, किसी के लिए हैमर हूं, किसी के लिए झाड़ू हूं, किसी के लिए तूफान हूं, किसी के लिए क्या हूं, आई डोंट नो, बट आई ओनली नो वन थिंग, माई इंटेंशन। एंड संकल्प जी, कभी कभी मैं कॉलेज में जाता हूँ, एक चीज कहता हूँ, आई ऑलवेज स्पीक ऑफ दैट माई कंटेंट माइट बी गुड बट माई इंटेंट ऑलवेज एक्सीड्स दैट। क्योंकि मेरा इंटेंशन है देना, वो कंटेंट कैसा भी हो, मेरा इंटेंशन दिख जाता है। सो दैट्स हाउ आई डू। आई से एंड आई वांट यू पीपल टू बी लाइक दैट। आई वांट टू बी जस्ट लाइक दैट। क्यों नहीं भाई? दुनिया में भरे कांटे हैं तो हम थोड़े फूल खिला दें, क्या प्रॉब्लम है? थैंक यू सो हाथ मच, गंदे होंगे, लेकिन करने दो। उसने हमें इस जहां में भेजा है ना, इस जहां को सुंदर बना के जाऊंगा। अगर मिट्टी में पेड़ नहीं लगा पाए तो क्या आपके हृदय में तो लगा सकता हूं। आई डोंट जस्ट सो द सीड्स of plants, I sow the seeds of divinity, and I believe none of you will be left out without getting drenched in that rain of divinity. मैं तो नहीं छोड़ने वाला। Thank you so much, Mahadev, for this blessing. Thank you. Thank you। Thank you, Hare। कुछ लोग डिजिटल हाथ उठा उठा के थक गए नीचे कर। I'm sorry for taking so much time. Thank you so much. No, if you could not have asked this question, these beautiful answers could not come out. That's what I said, no, कि उत्तर का महत्व नहीं है, सवाल का महत्व है। इसलिए Q&A है, पहले क्वेश्चन फिर आंसर।
जैसे शिव और पार्वती के जैसा नहीं है, राधा और कृष्ण है। अब कोई सर के ऊपर हाथ लगा के बैठा, बोला ये सब कुछ बोल देता, जो मैं सोच रहा हूँ वही बोल रहा है। चलो ठीक है। धन्यवाद महादेव, थैंक यू सो Thank you मच। so much, Deepika ji. Thank you for that wonderful questions, and I believe like everybody saw their beauty within themselves. तो कभी कभी लगता है ना कि व्हाट्स द पर्पस ऑफ माई लाइफ? योर पर्पस ऑफ लाइफ इज वेरी सिंपल, मेक इट ब्यूटीफुल, दैट्स इट। कचरा बहुत लोग करते हैं, अपना जीवन को सुधारो, सुंदर बनाओ, सबका जीवन सुंदर करो। सनातन धर्म में एक बहुत अच्छी बात है, बिफोर आई मूव आउट टू दिस फेलो, सनातन धर्म में इसलिए ये कहा जाता है कि विजय जी आप शायद पढ़े होंगे कि हम खाते इसलिए हैं कि ताकि हम दूसरों को खिला सके। We eat so that we can feed others. हम इसलिए खाते हैं ताकि दूसरों का पेट भर सके। You see the farmer. What is the work of a farmer? He eats so that he can produce more food for others. Yes or no? मैं वही कहता हूं, खाना इसलिए खाओ ताकि दूसरों का पेट भर सको। भगवान की ध्यान इसलिए करो ताकि उसकी दिव्यता सबको दिखा सको। You become so bright as a light that everybody is just mesmerized by the way you are. 4 हाथ की जरूरत नहीं है, 2 हाथ दिए है ना उसने, काफी है। ठीक है, चलो यहाँ। और तुम्हारा वो लॉन्ग वाला प्रयोग हुआ कि नहीं, फोटो के बीच में रख के? उसको छोड़िए, मेरे पास 2 क्वेश्चन है। पहला, आपने बताया था कि राधा रानी जो है वो एक्चुअली शिव का ही रूप है। अब आपने उस दिन बता दिया और आपने बोला कभी सेशन लेंगे, और उसके बाद जब भी मैं उनको देखता हूँ मुझे लगता है एक शिव का रूप कैसे? तो मुझे उस पर थोड़ी एक्सप्लेनेशन चाहिए, कैसे? क्या एक्सप्लेनेशन चाहिए? मतलब राधा रानी कैसे शिव का अवतार है? बहुत सिंपल है, उसको कहानी 2 लाइन में बोलता हूँ, समझ लेना। ओके। So one fine day, Shiva and Parvati were sitting together and they were discussing certain matters of this world, and they say, Shiva looked at Parvati and said, why should girls have all the fun? Then Parvati might have said, what? Then why don't you become a girl and see? So on a lighter note, generation को समझाने के लिए, but at the level of the divinity. See, the depiction, जैसे हम जानते हैं जब अष्टमातृकाएं से निकली, जब अष्टमातृकाओं का जन्म हुआ, मतलब उनका स्वरूप जब प्रकट हुआ, वो किससे प्रकट हुआ? फ्रॉम द मेल एनर्जी, फ्रॉम द मेल बॉडीज द फेमिनाइन एनर्जी केम आउट एज ए मातृका, राइट? तो अष्टमातृका बने। उस समय जैसे अष्टमातृका बने कि देयर इज अ क्वालिटी इन मी दैट इज फेमिनाइन। In every man there is a femininity in it. XY chromosomes, there is a femininity within us, and in every female there is a male quality as well, right? So ये स्थिति में ये कहानी जो है ये ऐसी मतलब ये तांत्रिक किताबों में ऐसे वर्णित है कि शिव और पार्वती जब बैठे थे तो पार्वती ने अपना दुख का बात बताया कि you see when I become that energy as काली, आपने बता तो दिया कि ये शक्ति है मुझ में, और मैं जब काली बनती हूं then I don't have any control on that. Then how should I learn to have that calmness and quietness? मेरे अंदर वो शांत भाव कैसे आए उस स्वरूप में जाके? तो शिव ने कहा जो सबसे सौम्य, जो सबसे शांत हो वो राधा हो सकती है। और कृष्ण, जब शिव किसका ध्यान करते हैं ये कहा जाता है? ये कहा जाता है कि वो विष्णु को ध्यान करते हैं, मतलब राम के अवतार। लेकिन उनको क्यों पसंद है? क्योंकि विष्णु जो है वो लीला करने में माहिर है, राइट? तो उन्होंने ये कहा कि यू आर आस्किंग मी ए क्वेश्चन एंड आई एम आल्सो हैविंग ए क्वेश्चन, कि तुझे ये चाहिए कि हाउ यू शुड बी काम एंड क्वाइट, एंड एट द सेम टाइम सम टाइम अगो यू आस्क्ड मी कि मैं विष्णु को क्यों ध्यान करता हूं।
So the answer is one, you have to experience the calmness and quietness, and I will show you why I like Krishna. Means Vishnu क्यों पसंद है मुझे. So what he did is, कृष्णा के बदले, मतलब जो काली थी वो कृष्ण बन के आई. एक चीज सुनो, दोनों का वर्ण क्या है? व्हाट इज द कलर? काला. शिव का रंग क्या है? गोरा. कर्पूर कर्पूर गौरम. गौरम. राधा का? गोरा. तो कलर मैच्ड. When Shiva took the avatar of Radha, उसने कहा कि I have lived like a male for a long time. आदि पुरुष कहते हो उसे, right? So for a long time I have lived like this. How would it be if I come in a feminine avatar? And then he said, you know, Krishna would be someone who will go through very intrinsic, means very tough times, but he will still be playful. So you will understand how to handle the things. Second thing, I will not be there with you forever. Why I will not be there with you forever? So that you understand how to continue the sadhana that you started. कि आप कृष्ण बन के जो चीज सीखने गए हो, उसको अगर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी तो उसको मैं कंट्रोल में रख लूंगी. But I will not be there always. I will move out and you will still continue to be there. और जब तक आप रहोगे, आपके साथ बहुत सारे चीजें घटित होंगी. बस उस घटनाओं में अपने आप के स्वरूप को शांत रखना, मुस्कुराते रहना. You should keep smiling. Then you will see that even when you are going through the very toughest of your lifetimes, जीवन का बहुत दुखमय परिस्थिति में भी जाते हो, if you know how to smile, आप देखना वो सारे चीजों से बच जाओगे. Nothing can hurt you in that space. लेकिन अगर तंत्र के तरीके से संपूर्णता से उसे समझना चाहते हो तो सेशन का वेट करना पड़ेगा, और वो ऐसे नहीं आएगा. जब आप तैयार होगे तभी आएगा. It's as simple as that. But the story says in a very simple way, Shiva decided like, okay, let me go and take a feminine and you go and take the male rupa and then we will do the leela and then we become this. और फिर उसके साथ जितने गोपिका बन के आए वो सब कौन थे? Who were they? सबकी कहानी है. कौन क्या बना, इंद्र क्या बना. Every god that played a role has a name as a Sakhi of Radha. इसीलिए माना जाता है कि उसे अलाहादिनी शक्ति क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके अवतरण होने से सारे देवी देवता उसके साथ उतर आए, इसीलिए उसे अलाहादिनी शक्ति कहते हैं. तो इसीलिए राधा का नाम इतना ऊपर रखा गया है सारे चीजों में. Can you see, when actually Ram came as an avatar, not many people came along with it. But when Krishna came, सब उतरे थे नीचे. क्यों? इस काली को शिव ने कहा कि तू इतनी मनमोहक होगी कि जो तुझे देखेगा वो मोह जाएगा, लेकिन जब तू मुझे देखेगी तू मोहित हो जाएगी. Remember that story I said that once Krishna came and saw Radha, and what she saw, like from every pore it was coming Krishna, Krishna, Krishna. By thinking that, Krishna fainted. And when Radha got up, that all the pores are saying Radha, 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 and Radha fainted. Itna प्यार करता है वो. So these are beautiful way of understanding all these things. लेकिन तंत्र में इसकी संपूर्ण व्याख्या है जो कि बहुत ही गहरा है एक्चुअली. तो अगर मैं कहूं
कि विष्णु के सारे अवतार कोई और अवतार नहीं है, सारे के सारे 10 महाविद्याएं हैं, मान लोगे? लेकिन मैं प्रूव कर सकता हूँ विष्णु का कोई अवतार है ही नहीं। अगर बोले तो लोग अभी मुझे मारने लगेंगे। बट इफ दे गो इनटू द तंत्र मार्ग, अगर वो उसे पढ़े तो आपको दिखेगा कि वो भी 10 अवतार जो माना जाता है वो 10 महाविद्याएं हैं। बट लेट अस नॉट गो देयर राइट नाउ। जैसे जैसे आप इवॉल्व होते जाओगे वैसे वैसे समझ बढ़ती जाएगी। बिकॉज इफ आई गिव ए कैरिकुलम ऑफ ए IAS ऑफिसर टू ए किंडरगार्टन स्टूडेंट, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, चप्पल फेंकेगा मेरे ऊपर। सो यू फर्स्ट ग्रो टू दैट लेवल, ऑल दिस थिंग्स विल कम। ऐसा कोई चीज नहीं है जो बताया नहीं जा सकता, प्रूव नहीं किया जा सकता, प्रमाण के साथ दिया जा सकता है। ओके, सो एनीथिंग एल्स? हाँ, सेकंड क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले एक एक्सपीरियंस रहेगा मेरा जो कल हुआ था मेरे साथ। कल मुझे एक्चुअली बहुत ज्यादा फीवर था। तो अचानक से पता नहीं सुबह से मुझे फीवर आना स्टार्ट हो गया, वो बहुत हाई हो गया था। तो उस मोमेंट पे मैं अराउंड 11:30 या 12 को मैं जप करने के लिए बैठा था, बिकॉज मैं जप अपना रात में ही करता हूँ, हनुमान चालीसा एंड बटुक भैरव का। तो जब मैं बटुक भैरव का जप कर रहा था तो अब मुझे एक विजन दिखा वहां पे। अब उसमें हुआ क्या, जब मैं जप करना स्टार्ट किया मैं आंख बंद करके बैठा था, एंड स्लोली आई थिंक 20 चैंटिंग्स के बाद आई कुड सी जो मेरा गांव का घर है वहां पे। अब मैं वहां पे हूँ, ठीक है। एंड स्लोली वहां वो जो पूरा एरिया था उसके अंदर से व्हाइट कलर की फ्लेम्स आनी स्टार्ट होती है, प्योर व्हाइट फ्लेम्स। इट्स नॉट, एंड आई एम नॉट फीलिंग एनी मींस बर्निंग सेंसेशन, इट्स ऑल वेरी पीसफुल। एंड जो उसका गेट है जहां से वो मींस आप विजिटर एक उसको फेस करेगा, वहां पे रेड फ्लेम्स थी। सो इनसाइड इट्स ऑल व्हाइट एंड आउटसाइड इट्स ऑल रेड। तो उसी के पीछे मेरे को एक क्वेश्चन है, ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आया। देन वो सरफेस के अंदर मुझे लेके गया, उसके अंदर। अब वहां पे मैं देखता हूँ, वहां पे अब पता नहीं है मेरा विजुअलाइजेशन है क्या है। देर वॉज, कपाल बोलते हो आप उसको, एक कपाल एंड 2 बोन्स क्रॉस्ड रखा हुआ है। अब उसको जब मैं देखता हूँ, अब वहां पे वो फायर उसको भस्म कर देती है वहां पे। एंड देन ही टेक्स मी बैक टू द सरफेस, एंड देन वो विजन खत्म हो जाता है वहां पे। तो मैं नॉर्मल अपना जब कंटिन्यू करके फिर उठ जाता हूँ, बस थिंकिंग मतलब क्या था। अब लोग बोलते हैं बुखार के समय आपको बिना मतलब के विजन्स आते हैं। सो एक ये था। सेकंड, जब मैं लेटने गया वहां पे सोने के लिए, तो अब मेरी आदत है कि आई लाइक टू मीन्स आप आई शुड से प्ले, और मेरी जो रिलेशनशिप है देवी के साथ, आई ट्रीट हर एज अ मदर। तो अब जैसे एक बच्चा अगर बीमार होता है तो वो बोल सकता है माँ मैं बीमार हूँ, मुझे हेल्प करो। तो आई वाज जस्ट लाइंग डाउन एंड आई वाज लाइक कि because I could experience this if I say हाँ माँ if you are there just give me a hint. So at that time I was getting no hints. It was like कि first time ऐसा हुआ है कि हाँ मैं सोच रहा हूँ उनके बारे में, I am not getting any hints. But before sleeping what happened was, आपने जैसे बोला कि पहले आप अपने अंदर को देखो और फिर देख कौन रहा है उसको देखो। So for a split second मैं उसको देखने गया जो देख रहा है, उधर टर्न हुआ, वहां पे खड़ी है। आई एम लाइक मैं राधा का ध्यान कर रहा हूँ, एंड जो देवी सामने खड़ी है शी लुक्स नथिंग लाइक राधा जो डिस्क्राइब किया गया है। उनका वर्ण काली की तरह है, वो जो पहने हैं वो दुर्गा का है। आई एम लाइक, उनके हाथ में कोई अस्त्र नहीं है, जस्ट 2 हैंड्स एंड ऑन द साइड। एंड आई एम वंडरिंग कौन सा रूप है, पता नहीं। एंड देन आई डोंट नो व्हेन कि मैं सो गया। एंड अभी जब मैं सेशन सुन रहा था, और रैंडमली पता है मुझे विजन सब क्यों दिख रहे हैं, अभी आप जब सेशन सुन रहा था उसी के बीच में अचानक से मुझे लगा कि आंख बंद कर लो, ऐसे करके बैठा, आई कैन सी। अब मंदिर कौन सा है मुझे नहीं पता, मैं ज्योतिर्लिंगों में ज्यादा गया नहीं हूँ। एक मंदिर है, स्ट्रेट द्वार है, वहां 2 लोग पूजा कर रहे हैं, भस्म की आरती हो रही है। एंड आई एम लाइक विजन, अब ये विजन है, विजुअलाइजेशन है, मुझे समझ में नहीं आता है। चलो, लोग खर्चा करके भी दर्शन नहीं मिलता, वहां पे तुमको फ्री में मिल रहा है, और क्या चाहिए? Be happy with that. The second हाँ। thing, when you saw that light and it came and it burned down on something, see, हम्म। when you are doing this jap of Patu Bhairav as well as Hanuman together, हाँ। वहाँ पे ऐसी ऊर्जा बनती है जहाँ पे whatever the visualization was coming to you was might not be just imagination or hallucination. It might be something like उस जगह पे शायद तंत्र प्रयोग किया हुआ है, जिसके वजह से उस तंत्र प्रयोग को काट मिल गई है, मीन्स इट हैज ब्रोकन डाउन ऑन दैट स्पेल।
That's what happened in that space. Might be because of your sadhana, might be whether you know it or not, might be you are also praying for your parents or something as it, whatever it is, in that way, वो बहुत ही सीधा सारा इंडिकेशन है कि वहां पे कोई ना कोई तंत्र प्रयोग हुआ था जिसका तोड़ हुआ है. It has broken it down. That's one thing. Second thing, when you are, for a split moment, when you go and see, like, who is seeing me? But I cannot see it. The only thing is, the mind is not able to watch it, and then it takes a shape and a form. It's not a hallucination. It's just taking a shape and a form so that you can see it. Right? But in that moment, all that you have to do is, अगर ऐसी कोई छवि आती है, अगर भूत आता सपने में, in that moment, if you saw a frightening face, you will not have asked me this question also. You should have told, मैं ना बहुत डर गया. क्यों? क्योंकि एक डरावना चीज मेरे सामने आया. अगर उसी हैलुसिनेशन से डर जाते हो तो वो हैलुसिनेशन को भगवान अगर दिखता है तो मानते क्यों नहीं हो? दैट मीन्स हम हिलते डुलते एथेइस्ट हैं, कभी इधर कभी उधर. At times we believe in God and the next time we don't. Right? So that's okay. If these things are happening, that's fine. No problem. But don't get stuck to that. Move away. बोला हाँ ठीक है, समझ गया, ये दिख गया, अब आगे what next? So what's next? एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा. ये बहुत ही चाइल्ड लाइक क्वेश्चन होगा, लेकिन आज एज आई सेड कि मैं देवी के साथ अब एक चाइल्ड की तरह बिहेव करता हूँ, तो वो इरिटेट तो नहीं हो जाएंगी मेरे से? इरिटेट हो जाएगी तो पीट देगी वो पक्का. So don't worry. तो मतलब किस लेवल तक उनसे हम लोग उस तरह का बिहेव कर सकते हैं? जब तक पीट ना दे तब लिमिट पता चल जाएगा ना. अच्छा. Because I cannot say her patience level, right? See, everybody sitting in this room has a different kind of patience level, and more than that, based on their state of mind. लेकिन उसका वैसा कुछ state of mind नहीं है. So बस वो जब तक अलाउ करेगी तब तक, जिस दिन पीट दिया समझ जाना इसके आगे नहीं जाना है. ठीक है. Very simple again, so that at least you will know that you are not hallucinating. हाँ. क्योंकि पिटाई तो hallucination में नहीं हो सकता ना. नहीं. Then it would be a proof that it is there, actually it is happening. तो मैं तो कहता हूँ खेलते रहो जब तक पीट ना दे, और उसके बाद कोई डाउट नहीं होगा. ठीक है. Yes, to finally summarize everything that we have been discussing, I called up someone, okay, and they were having some pain, physical pain. So I asked, how are you now? You have to listen this statement, what they said. He said like, दर्द है लेकिन आपके नाम से बड़ा नहीं है. The pain is there, but not bigger than your name. दर्द है लेकिन आपके नाम से बड़ा तो नहीं है. What would you call that? Unwavering faith. Unwavering faith. Can it move mountains? Absolutely. Absolutely it will. Okay. चलो then. Thank you for your questions. चिदविला सोया था फिर उठ के आ गया है. तब से घूमते जा रहा है, ट्रेन, बस, गाड़ी, कहाँ घूम रहा है बेचारा. ये लोग सोने नहीं देंगे. Namaskaram, Guruji. Actually, I was outside, so I was like going up and down, up and down. So I actually had a lot of questions, but we don't have time now. So actually, we are talking a lot about Kali today, and I just drew a Kali diagram today. So Bring out. तो आप ही हो culprit उसके पीछे, इसका मतलब. No, many of us don't know, like he is a wonderful artist of drawing as well. थोड़ा पास में लेके आओ भाई.
No. Very good. See, Actually, like I thought to draw Shiva underneath, but my heart wasn't agreeing to draw him underneath. I was like, no, I'm not gonna draw him down. it's beautiful. Let's share it in the group. Yes, Guruji. Maybe I'll be posting it in Instagram after 2-3 days or something. अच्छा, तिथि देख के चलो कोई नहीं. So, my doubt was actually that, like, there are so many doubts. One major doubt was this, that actually, since last Thursday or something, I was checking my swaras for some reason, and then both the swaras were running. From Saturday, Sunday, it so happened that actually, when I listen to some songs like basically Aigiri Nandiya or something like that, I get tears flowing, those tears of ecstasy or anything what we call it. So what happened was they just stopped coming, and that was bothering me a lot. Okay. Okay, after that, that's the question. So, like, what was really happening, Guruji? And then I check even now, most of the time, both the swaras are running. Now, understand this. On a lighter note, डैम में पानी खत्म हो गया है. On a real note, जब सूर्योदय हो गया मीन्स both the swaras are running together. अच्छा, ये स्वर अगर जो समझ नहीं पा रहे, वो ईड़ा पिंगला नाड़ी का बात कर रहा है. अच्छा. ठीक है. सो फॉर पीपल बोलेंगे ये कौन सा सुर का बात कर रहा है. नहीं, वो स्वर मतलब he is talking about the ईड़ा पिंगला नाड़ी, and there is a balance in that. What he is experiencing, what he is saying is like, if they are both going together, that means there is a balance in that, Chidilas. So when there is a balance in that, what is happening is when these two come into balance, then the third nadi gets activated. What is that? The Sushumna. Sushumna. The Sushumna nadi, when it comes into activation, that means it is a balanced path. Okay, so it is not on this side, it's not on that side. It is neither happy, it's not sad. It is a balanced way of coming out. So जब ये नाड़ी के अगर आप स्वरोदय के हिसाब से जा रहे हो, if you understand in that way, when this is activated, then what happens is neither you are emotional nor you are non-emotional. So you are in a very, very, what do you say, constant state of seeing that thing. The same thing that used to make you happy or make you sad does not matter. Understanding? That itself says that it is not just a idea that it is running together, but it's a confirmation that it is. क्योंकि स्थित प्रज्ञ हो गया, मतलब it's running in a same single balanced path. So I'm not becoming very much emotional to certain things. I'm not getting carried away by certain things. Is it not happening? No, I'm not carried out by anything right now. That's what I say. So it won't be, you won't be pulled out somewhere or you won't be crying like that. So there is a reason behind that. That's how you bring a वो एक स्वरूप विज्ञान में अगर जाते हो तो उसमें यही होता है, ऐसे ही चलेगा. So don't worry, nothing wrong has happened to you. You have not become less devotional. The only thing is you are more balanced right now. Okay. That does not mean you won't cry. That does not mean you won't smile. You will do both the things, but certainly in a much controlled way. और ऐसा नहीं है कि देवी गुस्सा हो गई इसीलिए उनके गाना सुन के आपके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे. Nothing as such. That's all stories of the mind. Yeah. Okay. And so then there is what I realized was, like, I knew it from my childhood, but I realized recently. And then we were talking in our college about this Adi Shankaracharya, and then I got reminded of the movie that I saw about him. In that, he says that he never had a fear of death. And then when I was watching the movie, it was same with me. I was like, why is he like putting to the top that he's not getting the fear of death? I don't know why, but from my childhood, I had never fear of death. I don't know why. You don't know why? It's So, very like, simple.
because you know there is nothing called as death. As simple as that. Since See, Chidvilas, I said to you even last time, I childhood. told you certain things, that there are certain sadhanas that you have done in your previous life that is very, very clairvoyant right now, means it's appearing. And it is very, very Okay. clear on your face. It's very, very clear in your actions. कहीं ना कहीं ऐसी साधनाएं हुई हैं आपके हाथ जिसके because of which there will be many things that would be easily be done by you. Okay. Okay. And that is another way why you are also in this path at this age. Mhm. So continue. Your Yes, sadhana Guruji. continues. Continue your sadhana. Yes, Guruji. But this time don't fail. Yes, Guruji. Absolutely not. I'm never going to leave this path. And at the same time, this coming Sunday, we will be initiating for the Swarnakarshan Bhairav. Right, Haribhai? Because from 8th or so, these people will start their practices. Okay. Okay. 7th or 8th, I believe. So if I do it next Sunday. Oh, so next Sunday. Okay, this Sunday only, right? Yeah, this Sunday will be initiating. So that whatever time frame is left out, they can practice on that. Yeah. So Haribhai, you have to just roll out like who all are willing to do this so that we can initiate them on this Sunday. Yes. Okay. Because time, it looks like December end, but it is already, we are entering into December. How time flies, we won't be able to even recognize like itna jaldi ho gaya wo. And there is so much of work to be done. So just tomorrow morning, if you can just distribute the sheet and let's decide who is sitting this time. Sure. Okay. So thank you, and all the Actually, people. Guruji, like, I have two things to say. One thing is, like, can you make that Chaya Purushwala thing little faster, because I have so many doubts about that. Okay. Okay. Anyways, you'll meet me, right? So when you meet me, ask all those. I'll clarify all that. Okay. Okay, na? So he got stuck or I got stuck? No, everybody else is moving on my screen. So that means he got stuck. Yeah. Sankalpji, thank you. Achha, okay, Guruji. Yes, Guruji. Are you able to hear me? Yeah. Yes, Guruji. Like, when I go to like a website or something, there are like different set of लगता है किसी ने मैजिक कर दिया, बोला बहुत रात हो गई है, बंद कर दो इसको. which are mentioned there about Rudraksh. Yeah, Chidvilas, I think there is some issue with your internet. We are not able to वीडियो hear ऑफ you कर दो, clearly. वीडियो ऑफ करके क्वेश्चन अच्छा. पूछ लो. Acha. Yes, Guruji. Yeah. Speak now. Yes, Guruji. Like, can you tell me the rules about Rudraksh? Because when I go, there are like different set of rules which are mentioned there. I am like confused to what to follow and all. Yeah, again the same thing is happening, Chidvilas. Yeah, he I was believe- asking about the rules of Rudraksh. Yeah. रूल्स ऑफ रुद्राक्ष, हे भगवान. ओके, ठीक है. पहले ये तो समझ में आ जाना चाहिए कि रुद्राक्ष पहन के घूम रहे हो या भद्राक्ष. I guess you like felt the Rudraksh, I guess, Guruji. I gave you that. Yeah. चलो ठीक है. What are the rules and regulations of Rules wearing of- Rudraksh, right? Yeah. It yeah, depends on the way you have consecrated it. अगर आप इसको सात्विक रूप से कंसिक्रेशन करते हो, उस रुद्राक्ष में प्राण प्रतिष्ठा करते हो, तो उसमें बहुत सारे नियम लागू हो जाते हैं. जैसे आप उसको पहन के स्मशान नहीं जा सकते, वॉशरूम नहीं जा सकते, उसको पहन के नॉनवेज नहीं खा सकते, एंड ऑल दोस रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द वर्ल्ड कम्स इनटू प्ले. सारे चीजें आती है. Okay. लेकिन अगर वो तंत्र विधि से उसको स्थापित किया गया है, शैव मार्ग से उसको स्थापित किया गया है, तो क्या स्मशान, क्या इट डज नॉट मैटर. वेर एवर यू गो, कहीं पे भी चले जाओ, धारण कर सकते हो. सो इट डिपेंड्स
what way you have consecrated that. या बस वो माला ले लिए, उठा लिए और उसको जाप करने लगे. I तो भी actually like I actually did a two days process. I just one day I dipped in this ghee, and then other day in the full fat milk. That was the only thing that I did. okay. So So was what it about my energized? Rudraksh Guruji? So was it energized is the question. I don't know, Guruji. Like you felt it, you must tell me how it is. Okay, no problem. So when you come, you just bring that again, okay? Okay, Guruji. And if people want to, no, बता भी दिया है कैसे actually माला को कैसे प्राण प्रतिष्ठा की जाती है. Have you done that session, Hari bhai? Like how to do a pran pratishtha on any kind of mala actually? Nahi? No, we haven't done any session, but you told, I think, 1 or 2 times. Okay. Especially when we did this on Shivratri. Yeah. Nahi, We jab, have used Bhasma that time. Okay. So when these people were doing for the sadhana for the students, they were doing that, right? Yes, ma'am. Okay. No problem. Okay. So we'll see, like we'll also teach you on that part. Yes, सिखाने के लिए Guruji. Like I was बहुत actually coming. I am thinking to come this weekend, Guruji. Is it like possible to come to your home this weekend? You let me know if I am available at home surely. Okay. कुछ लोग Okay, पिछले Guruji. 4 महीने से मेरा फोन का इंतजार कर रहे हैं. Okay. Actually, my mother was like, "You are concerning Guruji." I'm like, "He's my Guruji. I am like going to speak to him." Like she's like, "Don't bother him. Don't make him into trouble or something." I'm like, "No, he's my Guruji." Oh, That's like the kind of probably. thing that goes between me and my mother when I start like messaging you and all. She's also listening. She's in the train, I believe, right? Yeah, yes, she's in the train. I'm in home. Okay, she's returning back from Kashi, right? Okay. Yeah. Actually, I thought there'd be 1 week of missing classes, and also I did not go there. Oh. Chalo. Okay. So when you meet, we will discuss all that. Okay. So not an issue. Yes, Guruji. Yes, Guruji. Yes, So Guruji. long Q&A. So thank you everyone for your time, your patience to be here, and I believe like we talked so many things today again. So many things that were never questioned or asked also were brought into play. Why Purnima, Chandrama and all this, and people don't even know why. ऐसा क्यों है? ठीक है, कभी तिथि के बारे में बता देंगे आप कैसे बनाया गया है सारी चीजें. So wonderful. So as I said, the kind of questions you bring, the better it becomes. So it's not me, it's you. सुंदरता आपके सवाल में है, मेरे उत्तर में नहीं है शायद. और शायद आपके सुंदरता को देख के वो उससे कुछ प्रवाहित हो जाता है, like प्रभावित हो जाता है शायद. What that would be the right word. So thank you for your time and your presence. And till we meet on the Sunday, Hari bhai anyways he will be putting forth about this धनाकर्षण भैरव मंत्र सिद्धि के लिए वो जो साधना है उसकी क्या जरूरतें हैं, क्या है, and who all are going to do that. Please decide on that part, because this is one sadhana that is actually a little bit on the higher pricing side. So that's where people again, but some people will agree to that. उनको पता है. मैंने कहा था कि अगर तुम एक बार इसको करते हो और उसका अगर सही तरीके से उसका what benefit you get, you realize, then अगली बार लाख रुपए करूंगा तब भी देखे आओगे. And we all have stories to tell for that. So anyway, Maraji, you're my. so just remember one thing, find that beauty within. That's it. And that beauty will lead you to that God. Whether you see it in a buffalo, in a cattle, a cow or a crow, all that you see, if you see it,
within you is more important. Aham Brahmasmi. Tat Tvamasi. Har Har Mahadev.